Hi Sudhir bhai, good evening. Good evening, Mohit bhai. This is a surprise session to everyone because ये प्लान नहीं किया था. ऐसे ही काफी टाइम से कोई स्पेसिस हुआ नहीं था. तो आई थॉट एक डिस्कशन किया जाए. So I hope I'm audible, Sudhir bhai. Yes, Mohit bhai. Clear एकदम. Okay. So there is nothing much to discuss, but since we have already shared with you guys that now we are SEBI registered. A new firm called Equity for Life IH Analytics is a SEBI registered research analyst firm. So please, whatever we discuss in this session, don't take it as a recommendation. Please consult with your financial advisor before taking any decision because we might have positions in those stocks or in those companies. So let's start with queries. If you want to discuss anything about markets, what is your view on markets, stocks पर आपका कोई अगर query होता है, then we can take it. So generally, what do I think about the market? So currently momentum is very high in markets. Last अगर आप week और month का भी close देखते हो, तो all time high पर close है market का. Sentiments are very bullish. Liquidity flow is very good. So all in all, markets are looking very good. And recently, whatever has happened politically as well in Maharashtra, I hope you all are aware. So that will also have a positive impact on the markets, considering next year elections we have. So market will closely watch that also. And as far as small cap index is concerned, small cap index is relatively stronger than broader indices such as Nifty and Sensex. So I think markets are in a pretty good shape, but you should look at stocks as well. If the stock which you are holding is expensive, then you should consider booking some profits because run up काफी अच्छा हुआ है अभी stocks में, even in the stocks which we are holding in our portfolio. So run up क्योंकि इतना अच्छा हुआ है, so you can think, you can consider booking some profits. But if you feel long term जो भी एक structural headwinds है वो अभी है सेक्टर में या कंपनी में, then you can keep on holding. So this is what I feel about markets right now. Momentum अच्छा है market में, बट जो भी आपके इंडिविजुअल काउंटर्स इंडिविजुअल स्टॉक्स है उन पर आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए कि वो वैल्यूएशन कितना अभी कमांड कर रहे हैं, नेक्स्ट कितने ईयर्स का मार्केट अभी वैल्यूएशन डिस्काउंट कर रहा है. सुधीर भाई, व्हाट इज योर व्यू ऑन द मार्केट्स? मोहित भाई, मार्केट मेरे को लग रहा है यस काफ़ी रन अप हो गया है एंड इवन स्टॉक्स हैव मूव्ड इन अ वेरी गुड वे. आई थिंक थोड़ा सा अभी कंसोलिडेशन मोड में जाना चाहिए फॉर द नेक्स्ट लेग ऑफ जर्नी इज़ व्हाट आई फील. बाकी मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपको फार्मा पे एज अ सेक्टर क्या व्यू लग रहा है एंड बिकॉज मेरे को लग रहा है काफ़ी स्टॉक्स बॉटम आउट हो रहे हैं फार्मा में जब मैं जनरली चार्ट्स को देख रहा था अभी. सो आई वुड लाइक टू नो योर व्यू एज टू क्या लग रहा है फार्मा सेक्टर ऑन द होल आपको अभी आगे जाके. इस पर इस फार्मा सेक्टर का सवाल है तो फंडामेंटली अगर अपन एक्सपोर्ट डेटा की तरफ भी देखते हैं तो लास्ट क्वार्टर एक्सपोर्ट डेटा अच्छा था. इवन जो Q4 के रिजल्ट थे वो भी अच्छे आए थे सभी फार्मा और एपीआई कंपनीज के लिए. तो आई थिंक बॉटम आउट हो रहा है सेक्टर और चार्ट्स भी उसी की तरफ एक इंडिकेशन दे रहे हैं. और जनरली जब भी जो रुपी है वो डॉलर के अगेंस्ट वीक होता है तब एक्सपोर्टर्स को बेनिफिट होता है और एक्सपोर्टर्स में फार्मा और आईटी सबसे आगे आते हैं. तो इन दोनों ही सेक्टर्स को आई थिंक आईटी भी अभी Q1 से थोड़ा बहुत हमें रिवाइवल दिखना चाहिए आईटी के भी नंबर्स में, बिकॉज एट्रिशन काफी पहले एक इशू था जो कि Q4 से ही कम हो गया है. और प्लस अभी डिमांड में भी थोड़ा बहुत रिवाइवल दिखेगा आईटी कंपनीज में. और फार्मा का जहाँ तक सवाल है, आई थिंक एक आपको ध्यान रखना होगा यूएसएफडीए जो भी अभी इंस्पेक्शंस हो रहे हैं तो उसमें अब मैं एक आर्टिकल देख रहा था जिसमें यूएसएफडीए इंस्पेक्शन ही बहुत कम हो रहे हैं इंडियन कंपनीज में. आई थिंक लास्ट आई थिंक 2016-17 से अब तक सबसे कम यूएसएफडीए इंस्पेक्शन हुए हैं. तो जो भी नई कंपनीज एंटर कर रही है, जो भी यूएसएफडीए टारगेट कर रही है, तो दैट कैन become an issue for those companies कि USFDA is not inspecting plants.
जिस स्पीड पर उनको करना चाहिए, so that can be an issue, but overall level पर I think pharma sector में valuations are also fair, तो थोड़ा बहुत re-rating का उम्मीद किया जा सकता है, and growth should also come, but इंडिविजुअल स्टॉक्स में काफी अच्छा हो सकता है फार्मा में, जो भी स्मॉल कैप या मिड कैप कंपनीज अच्छा है फार्मा में, उनमें अच्छा ट्रैक्शन दिख सकता है, बट आपको ये क्यूएसएफडी वाला पॉइंट ध्यान में रखना चाहिए. थैंक यू मोहित भाई. आई थिंक अभी किसी को भी अगर कुछ डिस्कशन करना है, कुछ भी अगर स्टॉक्स पर डिस्कशन, सेक्टर डिस्कशन, तो यू कैन रिक्वेस्ट और देन आई कैन, देयर आर टू. मोहित भाई, वन ऑफ द कंपनीज विच आई वाज जस्ट रीडिंग, ब्लिस जीवीएस फार्मा करके है. व्हिच वन? ब्लिस जीवीएस फार्मा. दिस टीवीएस फार्मा. हाँ जी. ओके. was just reading this company recently, इनका आके ARB आया है, जिसमें इन लोगों को आके US FDA का भी, इनके एक प्लांट को रिसेंटली अप्रूवल मिला. सिंस यू हैड इंसिस्टेड कि US FDA का अभी तक ऑडिट बहुत कम हो रहा है, सो इफ राइट. यू कैन जस्ट, इफ यू आर ट्रैकिंग इट, यू कैन थ्रो सम लाइट ऑन इट. इनका एक जो पालघर का जो प्लांट था, उनको अभी US FDA का अप्रूवल मिला है. And ओके. also there were some things which the management has actually told कि this year has been very good for them in the annual report, जो पिछले हम्म. annual reports में नहीं था, in हम्म. terms of increasing of capabilities and improvements in their capabilities के बारे में थोड़ा बहुत management directors report में भी आया है. So if you can just maybe, अगर आप स्क्रीन के सामने है तो एक बार कुछ देख सकते हैं, आपको कुछ समझ में आ रहा है इस कंपनी में, just So general view overall. But I'm only thing which looking. is, yeah, only thing which is worrying is that last quarter में जो था, the margin is be OPM has been beaten down very badly, राइट. which the management is also recognized in their AR. So इसको आगे कैसे take forward करना है, if you can just throw some light, not pertaining to the company as such, but जब ऐसे situations रहता हम कैसे इसको आगे देख सकते हैं. So, matlab, if I look at their balance sheet and their profit and loss numbers, so sales have been stagnant in last, you can say, 6 years. In FY17, they did 800 crores of revenue and now 750 crore of revenue. But इसी बीच में what has changed, तो फिक्स एसेट कम हुआ है कंपनी का, so I think कुछ ना कुछ slump से हुआ है. So बट this is why. 2023 का अगर हम नोट करेंगे मोहित भाई, तो देयर प्लांट एंड मशीनरी इज टेकन अ वोपिंग जंप फ्रॉम 153 crores to 221 crores फ्रॉम 22 to Right. 23. तो दिस इज व्हाट, इसमें मे बी कुछ आगे जाके ट्रिगर्स बन सकता है इसमें. Right. So we will have to read more about it, since ओके. I haven't gone through the annual report of this company, but looking at the numbers, and promoter is also increasing the stake. टेक, यस. So right, overall, but I think in past कुछ ना कुछ corporate governance issues रहे हैं इस company में. ओके. So we will have to be watchful of that. ओके. कि वो issues एक बार अपने को review करने हो. Sudeep ओके. bhai, can you see any requests? Because मुझे नहीं दिख रहा है, but there are 4 requests. So if you can see the request, then please accept those. नहीं भाई, रिक्वेस्ट तो कोई आया नहीं एक्चुअली. जीरो रिक्वेस्ट टू स्पीक से दिखा है. Okay, so I think there is some technical issue. Because मुझे 5 दिखा रहा है अभी 6 दिखा रहा है, but इसमें नहीं आ रहा. मे बी देयर सम टेक्निकल इशू. विहान जी, यू कैन आस्क योर क्वेरी. Mohit and everyone. Mohit, Yeah, I hi. know you are taking a lot of stocks. So, any auto ancillary stocks which you like or tracking, which you share something light with the line, it will be very helpful. Thank you. So currently, there isn't any fresh stock. So Rico Auto is there, which I'm tracking from 40 to 42 rupees when it used to trade at 40 to 42 rupees. Now the price is north of 100 rupees. So कोई fresh stock नहीं है, but I think Rico Auto can do well.
again, it is not a recommendation, but I feel this can do well. And then we are also holding force motors from very lower levels. Yeah, I तो know. उसपे भी कोई fresh, right? So there isn't any recommendation to buy any of these stocks, but I think they should do pretty well in longer run. But I think Sudhir Bhai is taking a lot of auto insurance stocks, so he can guide you better. One of the companies which have recently added or technically अच्छा breakout दिया is Federal Mogul. Federal Mogul. Yeah, recently बहुत अच्छा breakout दिया. In fact, again this is not a recommendation. Retest level के पास ही खड़ा है अभी भी ये. अच्छा रेंज बेस बनाया नीचे और वहां से ब्रेकआउट दिया जो पिस्टन्स का काम कर रहे हैं ज्यादातर फेडरल मोगल. इट्स सब्सिडरी ऑफ टेनेको इनकॉर्पोरेशन और गोएड से वर्क है करके एक जर्मन कंपनी है जिनके साथ इनका टाई अप हुआ है. पिस्टन्स का काम है. लुकिंग एट द पियर श्रीराम पिस्टन्स काफी अच्छा परफॉर्म किया है तो आगे जाके ये भी परफॉर्म कर सकता है इज व्हाट इवन आई एम एक्सपेक्टिंग. प्योरली टेक्निकली द चार्ट इज फैंटास्टिक एंड इट्स लुकिंग क्वाइट इंटरेस्टिंग टू मी. This is one of the stocks which I've recently read and I've added actually. Can you spell it out? Federal Mogul, Federal Mogul. Thank you. Pankaj ji, you can go ahead with your query, please. Pankaj ji. Am I audible? Yes sir. क्या मोहित जी DCX सिस्टम को आप ट्रैक करते हैं क्या? नहीं, DCX को टेक्निकल. ये मेनली डिफेंस सेगमेंट में काम करता है. केबल हार्नेसिंग का बिजनेस है एंड ब्यूटीफुल चार्ट पैटर्न अभी वो दिखा डेली चार्ट पैटर्न में. एक्चुअली मैं अगर कोई इसका कोई व्यू है आपका वो जानना चाहता हूँ. DCX systems, actually, I'm not taking it, Pankaj. Sudhir Bhai, if you have any view. And those who have requested earlier to speak, can you please cancel your request and send it again? Because there is some technical issue. तो जिन्होंने भी पहले रिक्वेस्ट भेजा था बोलने के लिए, एक बार कैंसिल करके वापस अपना रिक्वेस्ट भेजिए. Sudhir Bhai, any views on DCX systems if you are tracking this company? Sudhir Bhai? हाँ DCS सिस्टम्स में ट्रैक तो नहीं कर रहा हूँ मोहित भाई बट ओनली थिंग इज दैट इनका ओपीएम जो मैं देख पा रहा हूँ बहुत बहुत कम है. सो मेरा पहला का फिल्टर क्राइटेरिया में ही आके ये फिल्टर आउट हो जाता है एक्चुअली. सो ग्रोथ का प्रोस्पेक्ट आगे जाके थोड़ा बहुत दिख जाए तो मे बी वी वुड डेफिनेटली कंसिडर इट. Right, even debt is also high. अगर बैलेंस शीट देखते हैं around 500 crores का debt है, debt to equity is at 1. So right. Thank you. Yeah, Vinod ji, you can go ahead. गुड इवनिंग मोहन जी, मैं विनोद बोल रहा हूँ. मुझे थोड़ा एसजी फिनसर्व के बारे में जानना है. कल जो अपडेट आया था कि इसका Q1 का लोन ग्रोथ उन्होंने 28% ज्यादा किया और मैं इसको देख रहा हूँ. एक्चुअली मार्जिन्स ये बहुत अच्छा 80-90% मेंटेन किया था 2 क्वार्टर्स में कुछ. तो क्या ये फ्यूचर में क्या इतना मार्जिन ये मेंटेन करेंगे और क्या ये अभी इस वैल्यूएशन पे इसको ऐड करना चाहिए इसको क्या इसमें? So Vinod ji, ये मार्जिन 70 to 90% का जो लास्ट 2 क्वार्टर में आया वो मेंटेन नहीं होगा. बिकॉज कोई भी आप लेंडिंग कंपनी होता है, कोई भी फाइनेंस सेक्टर में कंपनी होता है, तो इनिशियली आप इक्विटी इन्फ्यूज करते हो. तो आप लास्ट के 1 साल में देखेंगे कि इक्विटी काफी अच्छा इंक्रीज हुआ है, इक्विटी कैपिटल, और रिजर्व्स भी अच्छे खासे बढ़े हैं. तो ये जो प्रमोटर्स है और जो भी हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स है, जो भी इन्वेस्टर्स है, उन्होंने इन्फ्यूज किया सारा पैसा और उसके ऊपर अपने बैलेंस शीट को बहुत कम लेवरेज किया अब तक कंपनी ने. तो इन फ्यूचर जो अपना इक्विटी इन्फ्यूज किया है उसके अगेंस्ट आप 2 to 3 टाइम्स या 4 टाइम्स अपने बुक को लेवरेज करोगे डिपेंडिंग ऑन योर क्वालिटी ऑफ बुक्स. जो कि क्योंकि एपीएल ग्रुप की कंपनी है तो क्वालिटी जो सॉरी क्रेडिट रेटिंग है कंपनी का हमेशा अच्छा ही रहेगा. तो इक्विटी के अगेंस्ट आपका जो बोरोविंग है वो इंक्रीज होगा, तो उससे आपका इंटरेस्ट कॉस्ट भी बढ़ेगा. तो मार्जिन इतने नहीं रहेंगे जितना अभी है. इसका मार्जिन विल रिड्यूस
बट जो स्केल है, जो बेस है, दैट विल इंक्रीज. मोहित भाई, Yeah, आपका yes, Sudhir bhai. हाँ नहीं, आपका आवाज नहीं आ रहा था, सो आई वाज जस्ट Yeah, I think there is some disturbance from Mr. Binod. ठीक है. विल कॉल द नेक्स्ट स्पीकर. नरेश जी. नरेश जी, you can go ahead with your query. Sudhir bhai, I think the disturbance is from your side. तो एक बार आप या तो हाँ, I'll just check. चेक कर. हाँ. Yeah. Hello. Am I audible? राजेश जी. राजेश खेमका जी. Hello. Yes. I want to congratulate Mr. Mohit for recommending Force Motor. Yeah. Thank you, Rajesh. Any other stock you can recommend like Force Motor? I want a huge amount in Force So- Motor. Thanks for that, sir. Yeah. Rajesh, first of all, we do not recommend any stock on social media. We just share information about that stock, or we share information about all those stocks on which we are bullish. So there isn't any recommendation as such. But currently, we are looking at some pharma companies where we are bullish. So pharma is a sector where you can find some very good opportunities where valuations are also fair and growth is yet to come. Any names you can suggest, sir? Not a I don't need a recommendation, but We have started tracking a very small cap company, Zim Laboratories, and even I have posted a thread about that company as well. yes, you have posted. So again, again that is not a recommendation, but the company is looking very good. They are spending a good amount on R&D from last 3 to 4 years consistently, and I think the company is ready for a good growth in next 3 to 4 years. So this is what we Zim feel. Laboratory. But Zim. we can go wrong as well. No, that's So, true. Anybody can please- go in. Anybody can go wrong in this market. Right. Zim Laboratories. I can repeat. If you can repeat once more name. So yeah, that is the Zim Laboratory. Okay, thank you, sir. You are doing a great job for us. yeah. Thank you, Rajesh, Thank you. for your Thank time. you. Thank you. Naresh ji, you can go ahead with your query, please. Even I can see Vijay ji in the listeners list. So Vijay ji, if you can provide your views on the market. I have already sent the request to you. Hi Vijay ji, good evening. कैसे हो Hi आप? Mohit, I'm good. How are you? I am very well. Okay. Long हाँ time yes बात नहीं yes हुआ. मोहित भाई. Right. So Right. क्या चल रहा है? क्या आप लोग क्या डिस्कस कर रहे हो यहाँ पे? So we are एकदम casual session है. ना ही पहले कुछ information था. जस्ट ऐसे ही डिस्कस कर रहे हैं मार्केट के बारे में, स्टॉक्स के बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में. Okay. So जस्ट आपका मार्केट पर अभी क्या व्यू बन रहा है? क्या लग रहा है आपको? See market presently अभी मार्केट तो बहुत बुलिश लग रहा है एंड अगर आप ये चीज़ मेरे को 1 महीने पहले पूछते तो शायद मेरा व्यू कुछ और था. बट जिस हिसाब से मार्केट रिएक्ट कर रहा है हर चीज़ों को, उस हिसाब से ऐसा लग रहा है कि मार्केट इज गोइंग स्ट्रॉन्ग अपसाइड
19,000 से लेके 20,000 तक के अपसाइड टारगेट आ रहे हैं। अभी मैं तो टेक्निकल्स को फॉलो करता हूँ, तो अगर हम लोग, जो मेरा एक मेथड है, बहुत सारे लोग जानते हैं रेंज कैलकुलेशन का, तो वो मेथड से 19,500 से लेके 20,000 के अपसाइड्स आ रहे हैं। और यही चीज अभी हम लोगों को समझ में आ रही है। अभी मैं कुछ दिन पहले भी ये चार्ट्स को ध्यान से देख रहा था, तो मैंने देखा कि मार्केट ऑलरेडी बुल रन में था। कोविड के बाद जो बुल रन चला वो पॉज उसको मिला रशिया यूक्रेन वॉर के वजह से, तो वहां पे ये मार्केट थोड़ा डिस्टर्ब हुआ। उसके बाद वापस से मार्केट थोड़ा ठीक हो रहा था, वैसे यूएस इन्फ्लेशन की न्यूज आनी शुरू हो गई, तो ये हम लोग बोल सकते हैं कि जो बुल रन चल रहा था उसमें ब्रेक लगे और वापस मार्केट अपने वो रन के पास आया है। बट यस, अभी जिस हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट करते हो, जिस हिसाब से आप स्टॉक पिक करते हो, वही मेथड्स को फॉलो करना चाहिए। सिर्फ हम लोगों को इसलिए नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए कि मार्केट अभी हाईस पे है, तो हमें ये सोच के नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए कि भाई हम लोग रैली ना मिस कर दे। ये सारी चीज हमारे ध्यान में रखना चाहिए, बिकॉज ऐसे ऑल टाइम हाई के पास ही हमसे बहुत बड़ी बड़ी गलतियां हो जाती है। राइट। सो वेरी वेरी विजय ट्रू विजय भाई। रिस्क राइट। रिवॉर्ड एक चीज जो है जो हमको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। मार्केट ऑल टाइम हाई पे रहेगा, यहाँ से अपॉर्चुनिटी बड़ा दिख सकता है, बट जो रिस्क रिवॉर्ड रहता है अपने को वहीं पे काम करना चाहिए जहाँ पे अपना रिस्क रिवॉर्ड एवरेज फेवरेबल रहे और अपना कैपिटल प्रोटेक्टेड रहे, और ऐसे कोई जल्दबाजी में काम नहीं करना है फोमो में आके। आई थिंक दिस इज व्हाट विजय भाई इज आल्सो ट्राइंग यस, टू टेल। बिकॉज मैंने देखा है बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं ना कि यार मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, हमने कुछ नहीं किया, हमने कुछ कमाया नहीं, और वो सोशल मीडिया पे देखते रहते हैं कि बहुत सारे लोग कमा रहे हैं, बहुत सारी चीजें अच्छी। में फिर क्या होता है, हम लोग महंगे स्टॉक्स को हाथ लगा लेते हैं और फिर हम वहां पे एंटर करते हैं जहां पे लोगों को निकलना होता है। जैसे अभी एक सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे अभी TWL है, उसका जो ब्रेकआउट था वो ऑलमोस्ट 100 रुपीज के आसपास हुआ था। अभी वो स्टॉक कहाँ पे बैठा है, एंड स्टिल पीपल वांट्स के वो स्टॉक में हमको एंट्री करना है। सर क्या लगता है, क्या है, अरे वो चल गया, वो चल गया। अभी व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग, उस पे हमें हमारे सारी चीजों पे फोकस करना चाहिए। जैसे अभी मोहित ने भी बोला कि फार्मा इज लुकिंग गुड, तो सही बात है, फार्मा सेक्टर में अभी हम लोग चांस देख सकते हैं, बिकॉज नो वन इज इंटरेस्टेड इन फार्मा राइट नाउ। राइट। सो विजय जी, मेरा एक क्वेश्चन था, इसमें थोड़ा टेक्निकल साइड एक क्वेश्चन है कि अभी जैसे मार्केट इतना अच्छा है, ब्रेकआउट सभी स्टॉक्स में आते हैं, तो फंडामेंटली तो हम वैसा फिगर आउट कर लेते हैं कि ये अभी महंगा हो गया, इसको छोड़ देते हैं, इसमें कुछ ग्रोथ नहीं आना, इसको छोड़ देते हैं। आप सिर्फ अगर टेक्निकल में करते हो, आप टेक्निकल में कैसे डिसाइड करते हो कि ये ब्रेकआउट मुझे लेना है, ये ब्रेकआउट मुझे नहीं लेना? चलो, अच्छा बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। मोहित, जैसे क्या होता है ना, फॉर एग्जांपल आई ऑलवेज ट्रेड इन मल्टी ईयर ब्रेकआउट्स। मैं वो ट्रेड्स लेता हूँ जो 5 साल बाद, 10 साल बाद या 15 साल बाद, मतलब बहुत टाइम के बाद, लंबा समय के बाद स्टॉक ब्रेकआउट कर रहा है। तो जनरली क्या होता है ना कि अगर कोई स्टॉक ब्रेकआउट करता है तो वो सिर्फ आपको नहीं दिखता है, पूरे मार्केट को उसके बारे में पता रहता है, सब जगह पे उसकी बात चलती है। जैसे अभी हम लोग सिर्फ एग्जांपल इसका ले लेंगे, TWL का। एक सेकंड, मैं आपको बताता हूँ उसका एग्जैक्ट ब्रेकआउट कहाँ पे हुआ था। ओके, तो अभी हम लोग TWL को देखते हैं, और इसमें जो एग्जैक्ट हम लोग बोले कि ब्रेकआउट कहाँ हुआ था, तो इसका ब्रेकआउट हुआ था एक 197 180 के आसपास। अभी ये स्टॉक 500 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अभी अगर आपने 190 के या पास या 180 के पास आपने अपनी एंट्री मिस कर दी है किसी भी रीजन से, जैसे समझो हमारे ध्यान में नहीं था, हमने सोचा था कि इतना फास्ट मूव नहीं देगा, और ये ऑलरेडी 500 जा चुका है, मेरे ख्याल से 3-4 महीने में ही, 4-5 महीने में ही चला गया। तो अभी ये स्टॉक मेरे काम का नहीं है, भले वो कितना भी अच्छा हो, क्योंकि यहाँ पे 500 के बाद इसमें 1000 होगा कि नहीं होगा उसकी गारंटी बहुत कम है। हाँ, ये चीज की गारंटी है कि यहाँ पे शायद वापस से वो पॉज ले सकता है, टाइम करेक्शन करेगा और मेरा टाइम भी खाएगा, और यहाँ पे ये भी चीज है कि वापस से वो 180 या 200 300 भी आ सकता है। तो आपको जो भी ब्रेकआउट ट्रेड लेने हैं या आपको अवॉइड करना है, उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारी प्लानिंग। अभी
अगर आपने कोई स्टॉक में प्लान चल रहा है आपका, फॉर एग्जांपल अभी आपने फार्मा का नाम लिया, तो मैं मेरे इस साइड से बता रहा हूँ, कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आप मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि कोई कंपनी आपको लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, तो मैंने भी देखा था कि फार्मा सेक्टर बहुत अच्छा कर रहा है, ठीक है। तो मैं टेक्निकल्स जानता हूँ, मोहित को पता है, मेरे को फंडामेंटल्स के बारे में इतना कुछ ज्यादा पता नहीं है, तो मैं वो चीज को ज्यादा इवेल्युएट नहीं करता हूँ। तो मैं टेक्निकल्स के बेसिस पे सारे फार्मा स्टॉक्स को स्कैन कर रहा था, ठीक है। तो मैंने देखा कि सन फार्मा उसके ऑल टाइम हाई के पास ट्रेड कर रहा है, डॉक्टर रेड्डीज भी ऑलमोस्ट उसी के आसपास है। तो कौन सा ऐसा स्टॉक है जहां पे मेरे को अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड मिल सकता है, तो मैंने ग्लेनमार्क को चेक किया, ठीक है। अब ग्लेनमार्क को मैंने चेक किया तो मैंने देखा मंथली टाइम फ्रेम पे कि एक टाइम पे ग्लेनमार्क का अबाउट 1200 था, उसके मतलब 2015 में 1200 था, उसके बाद वो 200 तक भी आया था कोविड में, एंड नाउ ग्लेनमार्क इज रिवर्सिंग, जिसको हम लोग इनवर्स हेड एंड शोल्डर ब्रेकआउट बोलते हैं। जनरली ये बुलिश एक पैटर्न होता है। तो अभी मेरा ग्लेनमार्क में ट्रेड प्लान होना शुरू हो गया है। अभी जैसे जैसे स्टॉक पॉजिटिव रिएक्ट करते जाएगा वैसे वैसे स्लोली स्टडीली मैं अपनी पोजीशन बनाऊंगा। अगर इसमें मेरा ध्यान 670 की जगह पे डायरेक्ट 1000 रुपए पे या 900 रुपए पे गया होता, तो शायद मैं यहाँ पे पोजीशन नहीं बनाता, क्योंकि फिर ये मेरे रिस्क टू रिवॉर्ड में फेवर में नहीं आता है। तो फिर वो टाइम पे मुझे वो स्टॉक को अवॉइड करना चाहिए, सिंपली बात है। आपको दूसरे किसी स्टॉक का वेट करना चाहिए या फिर किसी और चीज पे फोकस करना चाहिए। मैंने बहुत लोगों को देखा है, आप स्टॉक, बहुत सारे लोग स्टॉक अच्छा सिलेक्ट करते हैं पर गलत टाइम पे सिलेक्ट करते हैं। राइट। सो आप मतलब जितना मैं समझ पाया अभी तक कि जो भी स्टॉक चल चुका है बहुत ज्यादा, उसको आपको सिलेक्ट नहीं करना है। जिसमें फ्रेश ब्रेकआउट आता है एक बेस फॉर्मेशन के बाद, जो हाई से काफी करेक्ट हो चुका हो या फिर ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट कर हाँ, रहा हो काफी टाइम यस, बाद, तो ये आपका अप्रोच राइट रहता है राइट, मार्केट में जब भी आप स्टॉक हाँ। सिलेक्ट करें। ओके, परफेक्ट परफेक्ट। और विजय जी, लास्ट क्वेश्चन, अभी आप कौन से सेक्टर और देख रहे हैं? सेक्टर या फिर अगर आप कोई स्टॉक बताना चाहते हो देखो, अभी। मैं ऑटो सेक्टर पे पिछले 1.5 साल से बुलिश हूँ, और जितने भी लोग मुझे सोशल मीडिया पे जानते हैं उनको पता है कि ऑटो सेक्टर के बारे में मैं हमेशा बोल रहा था, क्योंकि जैसे मैं स्टॉक्स के चार्ट देखता हूँ ना, वैसे मैं इंडेक्स के भी चार्ट देखता हूँ। तो आज से 2-1.5 साल पहले ऑटो इंडेक्स में ब्रेकआउट आया था 5 साल के बाद, 2017-18 के बाद। तो अगर ऑटो इंडेक्स के चार्ट में ब्रेकआउट आ रहा है, इसका मतलब है कि ऑटो सेक्टर में कुछ अच्छी चीज डेवलप हो रही है। सबसे पहला स्टॉक जो मैंने पिक किया था 90 रुपीज में, दैट वाज मिंडा कॉप। उसको फिर हम लोग ने 200-210 में एग्जिट कर लिया। उसके बाद हम लोग ने नेक्स्ट स्टॉक पिक किया था, दैट वाज एमएनएम। फिर टीवीएस मोटर भी हमारे रेडार में आया था। मैं जो भी चीज बता रहा हूँ सब में मेथड सेम ही थी, सब लोग अपने मल्टी ईयर ब्रेकआउट्स को क्रॉस कर रहे थे। उसके बाद 6 महीने पहले अपोलो टायर और जेके टायर दोनों ने ब्रेकआउट्स क्रॉस किए थे, तो हमने दोनों में पोजीशन बनाई थी, पर जेके टायर्स में हमारे स्टॉप लॉस हिट हो गए थे, हम निकल गए। अपोलो टायर अभी भी अच्छा चल रहा था, वापस से जेके टायर अच्छा हो गया, तो अभी हम लोग देखेंगे कि पोजीशन बनानी है नहीं बनानी है, वो दैट इज द डिफरेंट पॉइंट। बट एज ऑफ नाउ ऑटो सेक्टर में से हम लोग अशोक लेलैंड और मारुति में फोकस कर रहे हैं। परफेक्ट। तो आई थिंक ऑटो सेक्टर हमने भी पिक किया था, इवन जो अपना एक छोटा सा वीडियो भी बनाया था, तो उसमें भी वी डिस्कस्ड अबाउट दिस सेक्टर, और फोर्स मोटर्स के बारे में भी हमने डिस्कस किया था, इफ यू रिमेम्बर। सो राइट, ऑटो सेक्टर ने काफी अभी तक अच्छा किया भी, और आई थिंक अभी FY24 में मार्जिन शुड आल्सो इम्प्रूव, क्योंकि प्राइसेस जो आपके कमोडिटी प्राइसेस है वो काफी स्टेबल हो गए, और पास ऑन तो बहुत पहले से ही हो गए थे। बट इसमें सुधीर भाई और विजय जी, एक मैं आपका व्यू जानना चाहूंगा टेक्सटाइल्स पर, बिकॉज आई थिंक टेक्सटाइल्स जो सेक्टर है दैट कैन बी नेक्स्ट ऑटो, मतलब ऑटो 2.0 होगा टेक्सटाइल, बिकॉज नोबडी इज लुकिंग एट दिस सेक्टर, वैल्यूएशंस आर वेरी वेरी डिप्रेस्ड। और जितना मैं अभी पढ़ पा रहा हूँ आर्टिकल्स के थ्रू, इवन जो नंबर्स है, जो कॉटन के प्राइसेस है वो धीरे धीरे इम्प्रूव होना भी स्टार्ट हुए हैं, ड्यू टू थोड़ा सा डिमांड रिवाइवल का भी है और कॉटन शॉर्टेज का भी है। तो आई थिंक टेक्सटाइल्स एक अच्छा सेक्टर हो सकता है। इस पे आप दोनों का क्या व्यू? तो मोहित, टेक्सटाइल के रिलेटेड तो मैं ज्यादा ये जो आपने बताया वो चीज पे तो मैंने कभी नोटिस नहीं किया, क्योंकि मैं वो सारी चीजें नहीं पढ़ता हूँ।
मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, केकेसीएल भी टेक्सटाइल रिलेटेड ही आता है, राइट? राइट, हाँ, केवल किरण या क्लोथिंग। तो केकेसीएल का जो ब्रेकआउट हुआ था ना, वो हुआ था जुलाई 2022 में 280 के आसपास, एंड दैट इज कॉल्ड रिवर्सल ब्रेकआउट। जैसे मैं अभी ग्लेनमार्क की बात कर रहा हूँ ना, वैसे टाइप का उसका टॉप बना था 2015 में। उसके बाद वो 280 हम्म, से ऑलमोस्ट, आई थिंक दिस वाज द फर्स्ट स्टॉक जो 22 में मेरे रेडार में आया था और हमने इसमें ट्रेड भी किया था। फिर हमने इसमें ऑल हम्म, टाइम हाई पे प्रॉफिट बुक कर लिया, बिकॉज वहां से इसमें रिजेक्शन आ रहे थे, मतलब नेगेटिव रिजेक्शन आ रहे थे। एंड नाउ अगेन हम्म, केकेसीएल ही अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है। तो ये एक हम्म, स्टॉक है जो मेरे रेडार में था। और जैसे हम्म, मैं बोलता हूँ कि मैं बहुत सारी चीजों को इंडेक्स के थ्रू ट्रैक करता हूँ, तो टेक्सटाइल के रिलेटेड ऐसा कोई स्पेसिफिक इंडेक्स नहीं है। तो हम्म, अभी अभी तक मेरे रेडार में कोई ऐसे टेक्सटाइल्स के स्टॉक आए नहीं हैं, राइट? बट अगर आते हैं तो अच्छी बात है। जनरली मैं ऐसे स्टॉक्स को ट्रैक करता हूँ जो ऑल टाइम हाई के पास है या 52 वीक हाई मार रहे हैं। ऐसे स्टॉक्स को मैं ज्यादा देखता हूँ। तो एज ऑफ नाउ तो मेरे रेडार में कोई ऐसे टेक्सटाइल स्टॉक आए नहीं है। सिर्फ ये केकेसीएल जो था वो एक हमारे इसमें था। ओके। सो मैं थोड़ा सा जो बात कर रहा हूँ वो जो भी कॉटन यार्न मैन्युफैक्चरर्स है हम्म। उनके बारे में थोड़ा बात कर रहा हूँ, जो मैन मेड फाइबर्स में है। वो सब स्टॉक का भी आई थिंक काफी टाइम से कंसोलिडेट कर रहे हैं। अगर आप मैं आपको नाम लूं तो एक बहुत पुरानी कंपनी है अंबिका कॉटन। ओके, हाँ हाँ। तो वो भी काफी काफी डिप्रेस्ड अभी वैल्यूएशंस पर है। मतलब आप अगर उनका फिक्स्ड एसेट या ग्रॉस ब्लॉक देखते हैं उसके आधे पर हम्म। कंपनी पूरा आपको मिल रहा है। राइट। अभी तो आई थिंक रिप्लेसमेंट वैल्यू इस टाइम पर बहुत अच्छा है उनका। मतलब उससे भी आधे पे वो कंपनी ट्रेड कर रही है। ओके। तो सुधीर भाई से भी व्यू लेते हैं। सुधीर भाई, आपका क्या व्यू है टेक्सटाइल्स पर, सर सेक्टर में या टेक्सटाइल्स कंपनीज पर? टेक्सटाइल्स भी आप अगर देखेंगे ज्यादातर, जैसे मोहित भाई आपने बोला था, जो यार्न्स बना रहे, जो स्पिनर्स हैं, उनके चार्ट्स काफी अच्छे बन रहे हैं। आप नितिन स्पिनर्स का चार्ट देख लें, दीपक स्पिनर्स का चार्ट देख लें, चार्ट का इनका सेटअप काफी अच्छा बन रहा है। अंबिका भी हमारे रेडार पे था। और एक कंपनी जो ऑलमोस्ट ब्रेकआउट के लिए तैयार हो रहा है वो वर्धमान टेक्सटाइल्स लिमिटेड है। इसका भी चार्ट बहुत अच्छा बन रहा है और काफी कैपेक्स ऑलरेडी आई थिंक टेक्सटाइल सेक्टर में हो चुका है। एंड एड ऑन सपोर्ट आई थिंक अभी मिलना चाहिए टेक्सटाइल सेक्टर को, कीपिंग इन माइंड की जैसे यूरोप हो गया या फिर यूएस हो गया, वहां पे आके रिसेशन काफी हद तक चल रहा था और एक्सपोर्ट्स काफी कम हो रहे थे। तो अभी एक्सपोर्ट्स धीरे धीरे आई थिंक ग्रो होना चाहिए और सेक्टर को थोड़ा सा वो माइलेज मिलना चाहिए, इज व्हाट आई अंडरस्टैंड ऑन टेक्सटाइल्स। परफेक्ट। इवन अगर कंपनीज के बारे में देखें तो बहुत छोटी छोटी कंपनीज है जिन्होंने लास्ट 3-4 साल में कैपेक्स किया है। तो ऑटो सेक्टर में जो हुआ था, अगर हम फोर्स मोटर्स का थोड़ा सा केस स्टडी लेते हैं, कंपनी ने 4 साल में करीबन 2000 करोड़ से ऊपर का कैपेक्स किया। एक तो अपने T1N मॉडल पर, जिसमें उन्होंने अर्बेनिया लॉन्च की और ट्रेवलर इलेक्ट्रिक भी अभी लॉन्च करेंगे। प्लस BS6 अपग्रेडेशन के लिए उन्होंने कैपेक्स किया था, जिसको मार्केट ने नोटिस नहीं किया था। बट जब वापस से सेक्टर का टाइम आया, कंपनी ने थोड़े बहुत नंबर्स देना शुरू किया, तब मार्केट ने नोटिस किया और उसको री रेट भी किया। तो सेम हो सकता है आई थिंक, जो ये टेक्सटाइल में कंपनीज है, जो भी छोटे छोटे कॉटन यार्न मैन्युफैक्चरर्स है, या फिर जैसे आपने बताया स्पिनिंग में जो कंपनीज है, आपने नाम भी बताए, तो जिन्होंने कैपेक्स अच्छा खासा किया है बट अभी तक मार्केट ने नोटिस नहीं किया है क्योंकि नंबर्स नहीं आ पाए हैं। तो आई थिंक वहां पर एक बहुत अच्छा री रेटिंग का एक चांस बनेगा। अगर आज अपन देखते हैं कोई भी एक अच्छी कंपनी जैसे अंबिका कॉटन है, तो उसका आप देखिए क्रॉस फ्लोक अराउंड 650-700 करोड़ का है, मार्केट कैप 900 करोड़ का है, और कंपनी के पास करीबन 200-300 करोड़ का कैश भी है। तो फर्दर आगे जाकर ग्रोथ के लिए कंपनी को एक्विजिशन कर सकती है या फिर कैपेसिटीज इंक्रीज कर सकती है। तो वो हमेशा उनमें प्लान्स में रहता है। इवन अगर आप कुछ छोटी कंपनीज में देखते हैं तो एक नाम लेना सही नहीं होगा, एक कंपनी सिर्फ 134 करोड़ का है, जिसका फिक्स एसेट 136 करोड़ का है, ग्रोस ब्लॉक 300 करोड़ से ऊपर का है, जो कि सेम सेगमेंट में कॉटन यार्न और फाइबर मैन्युफैक्चरर है। और उसके क्लाइंट्स भी अच्छे खासे हैं, लेवाइस है, H&M, एडिडास, टॉमी, देन जैक एंड जोन्स। तो ये कंपनीज आपको बहुत ही एक कंपेलिंग वैल्यूएशन पर मिल रहा है। तो आई थिंक टेक्सटाइल्स का जब नंबर्स वापस से आएगा, तो जैसा ऑटो सेक्टर में हुआ था अब तक कि नंबर्स थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव हुए, बट री रेटिंग बहुत पहले आ गया, मार्केट ने री रेट बहुत पहले कर दिया।
फोर्स मोटर्स के केस में भी आप देखते हैं तो नंबर्स अभी तक नहीं आए। लास्ट क्वार्टर भी 118 करोड़ का कुछ एबिटा आया है और Q2 में भी 98 करोड़ का एबिटा था। बट अभी वो क्योंकि कंसिस्टेंसी आ गया है नंबर्स में और नंबर्स दिख रहा है मार्केट को कि यहाँ से बेटर होते जा रहे हैं, तो मार्केट ने पहले ही उस कंपनी को री-रेट कर दिया। जो एक टाइम पर 2000 करोड़ 1800 करोड़ के मार्केट कैप पर कोई नहीं लेता था, 3600 करोड़ के मार्केट कैप पर मतलब डबल में सब बातें कर रहे हैं। तो आई थिंक टेक्सटाइल में जो भी ये कंपनीज है जो अपने ग्रोस ब्लॉक के आधे पे या फिक्स एसेट के 1 टाइम पे या फिर 0.5 टाइम्स पे मिल रहा है, उनमें आई थिंक एक बार नंबर आने लग जाए तो सेम री-रेटिंग होने का एक केस बनेगा। रुचि, आई थिंक सुदीप भाई क्वेरी है। हाँ रुचि जी, हाँ जी या मोहित। सो मेरा विजय सर से एक मेरे को पूछना था अबाउट निफ्टी आईटी। सर आप आईटी के बारे में अभी क्या सोचते हो? फर्स्ट क्वेश्चन मतलब आपका व्यू क्या है अभी आईटी के बारे में? सेकंड क्वेश्चन कि अगर इसने ब्रेकआउट दे दिया है या देना है तो कौन से स्टॉक्स पे ज़्यादा देखना चाहिए? जैसे आपने अभी लार्ज कैप आपने बताया कि ऑटो सेक्टर में आपने 2 साल पहले ही देख लिया था, ब्रेकआउट हो गया। देन जो आपने बात करी है वो शायद लार्ज कैप के बारे में बात करी है। तो हमें इन्फोसिस, टीसीएस, टेक महिंद्रा ये सब देखना चाहिए या मिड कैप में? क्योंकि जो मैंने अभी तक देखा है उन पे ज़्यादा फास्ट रन आता है, जैसे परसिस्टेंट, कोफोर्ज, इन सब पे, देन इन्फोसिस, टीसीएस, टेक महिंद्रा। आपका व्यू क्या है सर, कैसे उसको कैप्चर करना चाहिए? रुचि जी, अगर आप आईटी सेक्टर को अभी देखोगे ना तो ये पूरा सेक्टर मतलब अपने ऑल टाइम हाई से अगर आप बोलोगे तो ये ऑलमोस्ट करेक्ट हो चुका था 33%। और अभी ये जहाँ पे ट्रेड कर रहा है तो कुछ 25-26% नीचे की तरफ ट्रेड कर रहा है। अभी यहाँ पे दो, अगर आपको आईटी सेक्टर पे ट्रेड लेना है या आईटी सेक्टर पे आपको कुछ करना है तो आपको 2-3 चीजों का पहले से ही ध्यान रखना पड़ेगा कि आप एक ऐसे सेक्टर में पैसा डालने वाले हो जो सेक्टर में अभी मंदी चल रही है। मंदी इन द सेंस जो सेक्टर में अभी थोड़ा प्रेशर है, डिप्रेशन है, क्योंकि यूएस जनरली हमारे जो भी लार्ज कैप स्टॉक्स है इंडिया में, टीसीएस हो गए, इन्फोसिस हो गए, ये जनरली यूएस की बहुत सारी बैंकिंग को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अगर वहां पे बैंकिंग में इशू चल रहे हैं, इसका मतलब है कि वो लोग अपने ऑर्डर्स को कम करेंगे, अपने बिजनेस को कम करेंगे, और वो कम करेंगे तो इम्पैक्ट ये कंपनीज पे आएगा। राइट। और वैसे भी कोविड के बाद अगर हम लोग सिर्फ आईटी इंडेक्स की बात करें, पहले कोविड के पहले से तो ऑलमोस्ट 140% ये चले थे। और कोविड के बाद आईटी स्टॉक्स आप कोई भी देख लो, कोई भी देख लो, मतलब वो बहुत अच्छा रनअप दिया है उसने। तो मतलब हम लोग टेक्निकल टर्म में एक बात बोलते हैं कि हर एक स्टॉक में 4 स्टेज होते हैं। मतलब वो तो मोहित भी बोलेगा बिकॉज फंडामेंटल में भी वो चीज आती है। एक होता है एक्यूमुलेशन, फिर होता है एडवांस, फिर होता है डिस्ट्रीब्यूशन, और फिर वापस से होता है डिक्लाइन होता है, और फिर वापस से एक्यूमुलेशन होता है। तो अभी अगर आपको आईटी में इन्वेस्ट करना है तो पहली बात तो ये है कि आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि आप वो सेक्टर में पैसा लगा रहे हो जो सेक्टर में अभी मोमेंटम नहीं है, राइट। तो अभी आपका पोर्टफोलियो समझो 100 रुपीज है, तो अभी आपको आईटी सेक्टर में 25 या 30 रुपीज से इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहिए। बिकॉज यहाँ पे कंसोलिडेशन 3 महीना चलेगा, 6 महीना चलेगा, 7 महीना चलेगा, या 2 महीना चलेगा, ये किसी को नहीं पता है। बट ये पता है, मैं आपको ये चीज की एक मतलब गारंटी तो नहीं बोल सकते, बट जितना मेरा एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पे बोल सकता हूँ कि यहाँ से डाउन साइड थोड़ी लिमिटेड है। तो अभी ये बात पता चल गई हमको। अभी बात आती है कि हम लोगों को इन्वेस्टमेंट कहाँ करना चाहिए, लार्ज कैप स्टॉक में कि मिड कैप स्टॉक में। अगर आपको वॉलेटिलिटी से ज्यादा डर नहीं लगता है तो आपको मिड कैप स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और अगर आपको वॉलेटिलिटी से थोड़ी तकलीफ होती है यार, क्योंकि ये जो कोफोर्ज है, एम्फासिस है, और जो दूसरा आपने अपने नाम लिया, वो सारे स्टॉक्स जो है ना, वो एक एक दिन में 5-5%, 6-6% या 10% भी ऊपर नीचे हो सकते हैं। जबकि लार्ज कैप स्टॉक है उसमें थोड़ी जी जो मूवमेंट है वो लिमिटेड होती है। तो अभी लार्ज कैप स्टॉक में मेरा ध्यान किस पे है? मेरा ध्यान है टेक महिंद्रा पे, अगर आप मुझे पर्सनली पूछो तो। क्योंकि टेक महिंद्रा अपने टॉप से ऑलमोस्ट अच्छा करेक्ट कर चुका है, और अभी एक मेरे हिसाब से मतलब नॉट ऑन द फंडामेंटल साइड, ऑन द टेक्निकल साइड, ये अभी पिछले, अगर आप इसका मंथली चार्ट देखोगे तो ये पिछले एक साल से 1170 और 980 के बीच में ये ट्रेड कर रहा है। तो दिस इज द टाइम जहां पे ये स्टॉक को कोई नहीं पूछ रहा है, राइट। तो यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट करने का फायदा क्या मिलेगा कि यू आर बाइंग ऑन अ
गुड प्राइस। Dips. जब इसको लोग पूछेंगे तब इसमें मोमेंटम आएगा, ये स्टॉक और भागेगा, ठीक है। तो वो टाइम पे आप और ऐड करके इसमें ट्रेड ले सकते हो। अगर आपको अगर आपको किसी मिड कैप में ट्रेड लेना है तो फिर आप कोफोर्स दे सकते हो, आप LTPS दे सकते हो, LTI देख सकते हो, और ये सारी चीजें हैं। तो बस ये एक सिंपल कॉन्सेप्ट है कि भाई हमको, हमारी पर्सनालिटी क्या है, हम वॉलेटिलिटी को आराम से झेल सकते हैं कि नहीं झेल सकते। अगर झेल सकते हैं, आप ज्यादा रिस्क लोगे मिड कैप में पैसा डाल के, तो आपको रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा। फॉर एग्जांपल जब IT चलेंगे, ऐसा हो सकता है कि भाई आपको टेक महिंद्रा सिर्फ 15% रिटर्न देगा, शायद कोफोज या एम्फासिस आपको 25-30% रिटर्न दे, बिकॉज ऑफ द नेचर। Right. क्योंकि लार्ज कैप स्टॉक इतना भागेगे भी नहीं और इतना गिरेगे भी नहीं, ठीक है। उनमें एक मतलब एक स्टेडी ग्रोथ होता है, और अगर वो गिरेगे भी तो भी वो मतलब थोड़े थोड़े धीरे धीरे गिरते हैं। ये सारे मिड कैप स्टॉक 10% की लोअर सर्किट लगा के बैठ जाते हैं। तो ये बात तो पक्की है कि IT में अभी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, बट आपको ये भी चीज जरूर ध्यान में रखना चाहिए कि आप ऐसे सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहे हो जो अभी मोमेंटम में नहीं है। तो आपको वो पैसे लगाने चाहिए जो शायद आपको अभी दिमाग में ऐसा ही सोचना चाहिए कि 1 साल तक इसमें कुछ नहीं हो सकता। ठीक है। तो मैं तो ये सोचता हूँ कि भाई अगर मेरे को FD करनी है 1 साल के लिए, वहां पे मेरे को 6% या 6.5% रिटर्न मिलेगा, तो भाई मेरे को तो ये स्टॉक में तो मैं बेटर ही कमा लूंगा। ठीक है सर। सर आपका सिल्वर पे क्या व्यू है सर टेक्निकली? मैं कमोडिटी में ट्रेड नहीं करता हूँ, ओके। पर अगर आप सिल्वर का चार्ट देखोगे तो वो ऑल टाइम हाई के पास से रिजेक्ट हुआ है, और जनरली ऑल टाइम हाई से मतलब उसका 77,500 कुछ ऑल टाइम हाई था, वहां से वो रिजेक्ट हुआ है। तो अगर वो फिर से वो लेवल ब्रेक करेगा तो ठीक है। बाकी सिल्वर में अगर आप मतलब इन्वेस्टमेंट करोगे तो कुछ मिलेगा नहीं, बस आप ट्रेड करोगे तो ही मिलेगा, इसीलिए मैं ज्यादातर ये सब चीजों में देखता नहीं। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। जस्ट टू ऐड वन पॉइंट रुचि मैम, अगर आपको लग रहा है कि आपका रिस्क एपेटाइट थोड़ा छोटा है तो यू कैन ऑल्सो गो इन फॉर एन बास्केट अप्रोच, जो हम लोग यूजुअली करते हैं कि हाँ एक लार्ज कैप में वी कैन पिक 4 to 5 स्टॉक्स आउट ऑफ द IT सेक्टर एज सच, एक बास्केट बना लीजिए उसका और एक अमाउंट फिक्स कर लीजिए। जैसे आपका पोर्टफोलियो 100% है तो IT हमको लग रहा है कि हाँ भाई ड्रॉडाउन इसमें एट द मैक्स अभी 10 से 20% का ही है, बट अपवर्ड मूव जो है मेरे को लग रहा है कि हाँ भाई 70-80% तक हो सकता है। तो आप इसमें ये कर सकते हैं कि एक बास्केट बना लीजिए और बास्केट में आप आके एलोकेशन करके काम कर सकते हैं, विच वुड मिटिगेट द रिस्क ऑफ द मिड कैप इन केस देयर इज अ फॉल इन द मिड कैप, also the large cap would cover it. So the basket approach would help you a lot in this. When you are sure of a sector कि हाँ ये सेक्टर अब यहाँ से जाने के लिए कोई बड़ा नहीं है, बट आने के लिए रिटर्न बड़ा है. So combination of mid cap and large cap compensate the loss of mid cap if there is any. यूजुअली ये अप्रोच हम लोग तब फॉलो करते हैं जब आके हमको लग रहा है कि ये सेक्टर बॉटम आउट हो रहा है और यहाँ से जाने के लिए सिर्फ 10 या 20% ही और आने के लिए एटलीस्ट 50 to 60% रिटर्न रहता है, तब ये अप्रोच लेते हैं हम लोग कि हाँ एक सेक्टर में एलोकेशन पूरा करना है अपने को अच्छा करके। ठीक है। थैंक यू विजय सर, थैंक यू मोहित। थैंक यू जी। सो अगर किसी को भी कुछ भी क्वेरी पूछना है तो यू कैन रिक्वेस्ट एंड देन वी कैन अलाउ यू टू स्पीक, बिकॉज़ आई रियांक जी, कैन। हाँ नहीं 3 लोगों का भी रिक्वेस्ट आया हुआ है सर। एक तो रियांक अरोरा जी है सर, यू कैन गो अच्छा, अहेड रियांक जी। रियांक का रिक्वेस्ट आया हुआ है क्या? नहीं, इज देयर ऑन द स्पीकर्स पैनल ऑलरेडी। नमन जी, बट आई कैन सी हिम। अच्छा, रियांक नहीं है अभी, सो आई हैव इनवाइटेड हिम to share his views on markets and stocks which he is tracking. So रियांक अगर आप आ सकते हो बोलने। I think Hi Mohit. Hi रियांक, good evening, Good कैसे हो? evening. I am good. आप कैसे हो? बस all good. So we are just discussing about stocks and markets. कौन market पे आपका क्या view है and stocks which you are liking currently, which you are holding. So what is your view on markets, रियांक? So I feel considering monthly closing हुआ था अभी कल 30th of June को,
तो कंसिडरिंग ओवरऑल मंथली क्लोजिंग मेरे को निफ्टी का काफ़ी अच्छा लगा. सो आई फील गोइंग फॉरवर्ड 20,500 21,000 मुझे दिखता है निफ्टी पे. So overall, I am pretty bullish, and I feel mid caps and small caps will do really well in the next 12 to 18 months. Okay, and any specific sectors or stocks you are looking at? Stocks का मैं बात कर सकता हूँ, मतलब sector specific तो मैंने इतना check नहीं किया. But considering for stocks, I am disclaimer देना जरूरी है क्या? बिल्कुल. ठीक है, तो डिस्क्लेमर दे देता हूँ एक कि मेरी पर्सनल होल्डिंग हो सकती है इन स्टॉक्स में. एंड इवन दो ये स्टॉक्स मैंने मोहित के साथ भी बहुत लोअर लेवल्स पे भी डिस्कस किया हुआ है, बट स्टिल आई एम प्रीटी बुलिश ऑन देम गोइंग फॉरवर्ड. तो एक तो किर्लोस्कर इलेक्ट्रिक करके कंपनी है, KECL. This stock I am pretty bullish on. So it is around like 120 levels right now. I feel it has a potential to double and triple from current levels. एक किर्लोस्कर इलेक्ट्रिक है, and one company is Jindal Saw. Jindal Saw has an amazing all-time high breakout, and going forward मुझे लगता है इसमें भी थोड़ा 50 to 75% upside we can project from current levels. And another company which has recently seen a great breakout, which is Philips Carbon Black, PCBL. तो इसमें भी काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट्स हो रहा है. फंडामेंटल साइड पे तो ऑफ कोर्स मोहित इज द एक्सपर्ट, जिनसे आप पूछ सकते हो इसके बारे में. बट गोइंग फॉरवर्ड आई फील 70 to 80% पोटेंशियल अपसाइड कैन बी सीन ऑन फिलिप्स कार्बन ब्लैक एज वेल. Perfect, Priyan. So, anything else to add, Sudhir bhai? I think there are no more queries as such. It was just a random. मैंने भी ऐसे ही ज्वाइन किया था कि मोहित भाई ने स्टार्ट किया था and we just started off. Right. So, मतलब कुछ किन्होंने ट्वीट किया है उन पे क्वेरीज है. Yogesh G. Mohit sir, Gensol is migrating from SME to main board. What do you think about fresh investment in it? So in Gensol, I think valuations are very fair. तो अगर आप बहुत ही अल्ट्रा लॉन्ग टर्म एक इन्वेस्टर है तो you can consider it, but otherwise it can consolidate in my view. तो आप उस हिसाब से देख सकते हैं. रुझान अरोड़ा, कैन यू प्लीज टेक माय क्वेश्चन? आप एक बार वापस से रिक्वेस्ट कीजिए. आई थिंक कुछ टेक्निकल इशू है बिकॉज आई कैन सी 29 रिक्वेस्ट, बट वहां पर हमें रिक्वेस्ट दिख नहीं रही है. सो सुधीर भाई, आई थिंक देयर इज सम टेक्निकल ग्लिच. आपको रिक्वेस्ट दिख रहा है क्या? बिकॉज देयर आर 29 रिक्वेस्ट बट आई कैन नॉट सी इवन वन. नहीं मोहित भाई, मेरे को तो कोई रिक्वेस्ट नहीं दिख रहा है. आई थिंक देयर इज सम I think अभय अंकल भी ज्वाइन किए. If we can invite him to talk something on textile, वो I think textile को काफी closely track कर रहे हैं. या आई विल इनवाइट. So there is one more query on the backdrop of auto ancillary. What is your view on Higashi Motors and PPAP Automotive? So Sudhir bhai, I think you are tracking one of these companies, either PPAP or Higashi. So any views? कौन सा है? एक तो इगाशी और दूसरा PPAP. नहीं, इगाशी बहुत पहले ट्रैक कर रहा था मोहित भाई. एज ऑफ नाउ this will definitely come on my radar once the price crosses above 615 level. As of now तो technically मुझे इतना यहाँ पे फिलहाल कुछ दिख नहीं रहा because there have been lots of rejections. So it's a no brainer after 615 जितना मुझे समझ में आ रहा है मोहित भाई. Okay. Any views on Mayur Unicorns or S Chan? S Chan, Sudhir bhai, if you are tracking. S Chand पे I think we should invite Raghav. He's been very closely tracking it. Raghav has also joined the session. Raghav, we can just give you updates on S Chand, please.
I So think I there have is some invited technical issue. Raghav. I have invited Raghav, but I think he hasn't accepted the request. सी यस चांद, जितना हम लोग समझ पा रहे हैं, जब तक एनईपी चालू नहीं होगा इसके कोई बड़े ट्रिगर्स फिलहाल नहीं आएंगे. एनईपी इज वन ऑफ द मेन ट्रिगर्स जो काफ़ी टाइम से पुश होता जा रहा है, और उसके चक्कर में ही आके ये द प्राइस इज गोइंग इनटू कंसोलिडेशन फॉर क्वाइट सम टाइम. बार बार ये एक अप मूव देता है, फिर कंसोलिडेशन में चला जाता है. बट वंस द ट्रिगर्स ऑफ एनईपी कम्स, आई थिंक एस चांद शुड प्ले आउट इन अ वेरी वेरी गुड वे. और जितना मैंने सुना है फ्रॉम राघव, द नेक्स्ट जनरेशन हैज कम इनसाइड एंड दे वांट टू ब्रिंग इन द चेंजेस इन एस चांद, एंड दे आर वर्किंग ऑन इट. Perfect. So, Sudeep, I cannot see any more requests to speak. So I think queries अभी नहीं है. राइट. मुझे 28 रिक्वेस्ट दिख रहा है, बट कुछ ना कुछ टेक्निकल ग्लिच है, बिकॉज इवन लोगों के भी मैसेज आ रहा है कि हमने आपको भेजा है रिक्वेस्ट, बट वो दिख नहीं रहा. मुझे भी कोई रिक्वेस्ट वैसे दिख तो नहीं रहे एक्चुअली. So I'll do one thing. I'll make Riyang the co-host. अगर उनको कुछ दिखता है, so Riyang, please accept the co-host invite, because we cannot see any request, but people are saying that they have. ठीक है, I have accepted the invite. Let me see if there are any Riyang, आपको रिक्वेस्ट दिख रहा है क्या? Yeah, I am seeing 28 requests on the panel. तो क्या एक एक करके invite करना है, और how do you want to do it? राइट, एक एक करके इनवाइट करना, बिकॉज मुझे और सुदीप भाई को नहीं दिख रहा है. ठीक है. बट इफ यू कैन सी द रिक्वेस्ट, देन वन बाय वन उनको हम. ठीक है, तो किसी एक को ले लूँ, मतलब, है ना, randomly. राइट. Okay, so I have invited Rahul Gupta. So Rahul, Hello. you can ask your question. Yeah. Thanks for allowing me. First of all, sir, एक क्वेश्चन हमारी तरफ से है जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री से ही है. आई एम ट्रैकिंग दिस स्टॉक लाइक अरविंद फैशन. तो उस पर व्यू जानना चाह रहा था कि आप लोगों का क्या व्यू है टेक्निकली. और दूसरा स्टॉक है डीबीएल, सर. तो इन दो स्टॉक पे आप लोगों का व्यू जानना चाह रहा था प्लीज. अरविंद फैशन एंड डीबीएल. डीबीएल. जी जी, केमिकल सेक्टर. दिलीप बिल्डकॉन. जी जी. दिलीप बिल्डकॉन. धनवंतरी वेंचर्स लिमिटेड करके है सर. अच्छा, ओके. जी डीबीएल. जी, धुनसरी वेंचर. धनसरी. ओके. सो अरविंद फैशंस का जहाँ तक सवाल है, आई थिंक वैल्यूएशंस आर क्वाइट रिच, और अभी रेड टेप भी आई थिंक लिस्ट हो जाना चाहिए बहुत जल्दी. तो आई विल प्रेफर रेड टेप ओवर अरविंद फैशंस, बिकॉज लास्ट के आप 3-4 साल भी देखते तो ग्रोथ कुछ इतना आया नहीं है, कंसिडरेबल ग्रोथ है नहीं कंपनी में, एंड इवन ब्रांड्स आर नॉट डूइंग दैट वेल. सो आई विल प्रेफर रेड टेप ओवर अरविंद फैशंस, जो कि शुड लिस्ट इन नेक्स्ट 1 month or so. Sudeep bhai or Riyank, Vijay ji, any technical view on Arvind Fashions? Sir, Arvind Fashions as of now is forming a good base in between 250 to 390 range. वीकली चार्ट पे बोल रहा हूँ मैं, दिस इज अ मिड टर्म व्यू. 390 के ऊपर इट्स अ नो ब्रेनर, बिकॉज दैट इज ऑल्सो ब्रेक डाउन पॉइंट जो पिछला रेसिस्टेंस था. सो अबव 390 इट्स डेफिनेटली अ नो ब्रेनर इज व्हाट आई एम एबल टू अंडरस्टैंड. Okay, so above 390, you can consider taking a trade in Arvind Fashions, but fundamentally, I don't like this company as much as Red Tape. So I'll prefer Red Tape over Arvind Fashions now. This is the. Okay. Regarding your second company, Dhanseri Ventures Limited, I have been closely tracking the stock. तो इसमें थोड़ा एक ट्रायंगल का ब्रेकआउट आया अभी रिसेंटली मंथली चार्ट्स पे. सो आई फील दैट कंपनी इज पोइज्ड फॉर 350 and 430 levels on the upside, and on the downside the support which you should look for is around about 240 230. तो ऊपर में 350 430 का पोटेंशियल रखता है. दिस इज व्हाट आई फील. ओके सर, थैंक यू.
Yeah, Riyank, we can take the next question. Okay, this is the first time I am conducting any space, so please bear with me. अरे कोई ना कोई ना कोई. ठीक है. So we are taking the next question from the line of Rohit Ahuja. Rohit ji, I have invited you to the speaker panel. Hello, Yes. am I audible? Yes, Yeah, Rohit, you are. yeah. Hi. So my question to Mohit is regarding the company called Neurland Laboratories, and I think you have invested in this company from last 1.5 year. I don't know if you are still holding or sold it. So what's your view on that? Because as far as I'm also invested in this company from last 3 years, and now they are like margins are expanding from 15% to going beyond 20%, and more CMS molecules are getting commercialized in next 1-2 year, and also contribution from the GDS specialty segment is going to increase. So what's your view on that after it has run up a lot? So, yeah, Rohit, I am holding this company from last, you can say 2 years, more than 2 years. So I started tracking it when it used to trade in 3 digits, and then the stock traded to I think around 2500 or so, and then it corrected to 900 levels, and now it is again at close to 3000 rupees. I think business is doing pretty well, and it was expected to, as they had acquired one new unit and they were spending a lot on that unit. And now they are ramping up the production in that unit, and also their molecules are also doing pretty well in CMS segment, as you have correctly pointed out. So I think in the longer run, the company should do well, but whether these margins are sustainable or not, we will get to know in next 2 to 3 quarters, because last 3 quarters have been pretty Yes, well for the company. And if we look at the Q4 numbers, I think they are not sustainable. yes, Revenues at 400 crores and operating profit at 120 crores. So I feel, this is my view, that this is not sustainable. We will get to know more in the next quarter, which is Q1. So I will consider booking some of my profits, because valuations are also, uh, you can say, fair, not if not rich yes. or expensive. So I'll consider taking out some of my gains. So this is my view. But yeah, Yeah, what about margins you? are not What? sustainable. Yeah, they are mentioned in the con calls, and also that the margin may be fluctuated on a quarter on quarter basis, because in some quarter they ship some molecules and in some quarter they not. So margin will fluctuate on quarter basis. But if we track it on a year on basis, margin are getting better because contribution from the CMS and specialty is now going to increase. Right. Yeah. Earlier they had guided for EBITDA margins in higher teens, but now they have achieved EBITDA margins of more than 20%. So the business is doing pretty well. I think if they can achieve margins of more than 20% consistently in next 2 to 3 years, then market should be happy if revenue growth is there. Yes, So yes. margins will moderate, I think, and margins will remain lumpy as the CMS contribution, I think, decreases, because in Q4, I think CMS contribution was very high, Yes, yes. which led to margin expansion. Because in CMS segment, the gross margin is as high as 60 to 70% in some of the molecules also. So I think our margins will moderate in coming quarters. So I'll prefer taking out some gains, and I have done so. Okay, okay. Thank you so much. Yeah. Okay. We have next question from the line of Nipun Agarwal. Nipun ji, you are in the speaker panel, so if you have any questions. Yeah, I just wanted to know regarding a company from textile sector, that is Phase 3. If anybody is tracking that company, you can tell about that company. Phase Uh, 3. so I have heard about this company. Hi Nikunj, I have heard about this company, but I'm not tracking it very closely. So Sudeep, bhai, Vijay ji, or Riyan, if any one of you is tracking this company, Phase Which 3. company? I did not hear the name. Phase 3, FAZTHRW.
phase 3. Phase 3 AutoFab or no? Phase 3, only Okay. phase. Phase 3Q. Phase 3Q. It's a Right. company from textile sector. So I am actually not tracking this company, so I will refrain from making any comments. Sudhir ji or Vijay ji, if you are. Technically, if we see on the shorter time frame, the stock has recently given a breakout on 14th of June, and it's almost been consolidating, I think, in the same zone only. So as of now, it would be advised to hold the stock with the stop loss somewhere in the range of around 380, sir. That would be the technical view. Okay. Okay, thank you. Thank you. Okay. We have a question from the line of Nirav ji. Nirav ji? Yes. Let me just invite him to the speaker panel. Hi Nirav ji, how are you? Hello, Nirav ji. Nirav ji, you are in the speaker panel, so if you wish to speak, you can unmute yourself. Okay. Sneha, you are also in the speaker panel, so if you have any questions, you can go ahead. Hi, Mohit. This is Sneha here. Yes. Yeah, hi. Yeah, I just wanted a small, your view on Jubilant Ingrevia. Their company is very confident on the capex which they are doing, but I think it's making a base from 380 to 420, 430. So, what is your view on how long it'll take still? So, in the case of Jubilant Ingrevia, we will have to wait for the commodity cycle to reverse, because when the company was demerged, the prices of their key commodity products or key chemicals such as ethyl acetate and acetic anhydride were on the higher side. So the company is, you can say, is working in a commoditized sector or commoditized products such as ethyl acetate and acetic anhydride. And they also do some CDMO items. Yeah. I'm not tracking this company very closely, Yeah. but yeah, they were pretty confident on their capex plans, and I used to take this company, but we will have to wait for the cycle to reverse. Reverse. Okay. So as long as the prices do not improve for their products, this will consolidate. This is what I feel. Okay. And I'm not so since I am not an expert in predicting the commodity cycle. So if anyone from any other from the panel, if if they can take the question. Any views on Jubilant Ingrevia? Priyank, Sudhir, Vijay? So technically, I feel Jubilant Ingrevia is not really in a good picture. The stock is moving in a downtrend, and chart पर भी इतना कुछ positive दिख नहीं रहा है. So like Mohit said that fundamental side पे भी उतना कुछ positive नहीं है, and nor on the technical side. So. But the management is still confident, no? They are like, we are going to do a good job and we are going to come out with good numbers. Yeah, but that will take time, Sneha. Okay. So management has their long-term picture in their mind. So I think it will take some time. And once the cycle reverses, then they will do pretty well. Okay. Because they are doing capex. Yeah. Thank you. Thank you so much, Mohit and Riyank. Thank you. Yeah. Hey, Mohit, Riyank, sorry. I think some issue was there, technical issue. Yeah. Sorry. Now I'm able to, you're able to hear me? Yes, Yeah, you are perfectly audible, Niraj. Yeah. Good evening. Good evening. How are you both? So wonderful. Thank you for inviting, and thank you for accepting the request. So I just have one question. What is a view to both of you, that Mohit and Riyank, and even to other host also? What is a Even view? Even Vijay ji is there. Yeah. Vijay bhai. Yeah. So I just wanted to know that what is a view on the printed circuit board industry or a sector?
Like say for example, today we all know that electric or electronic industry is growing. Like apart from the manufacturing, the EMS also, that is electronic manufacturing service industry also, electronic manufacturing sector also. And if you see in various states, the government are actually promoting the setting up of a unit for electronic sectors also, that is electronic industry. So you know that the backbone, no doubt, is one of the electric sector, maybe the chip, but printed circuit board is obviously one of the biggest raw material for this. Second, there may be a lead which may be used in the printed circuit board, that you know that from where it will come. But what is the view on this printed circuit board sector, and how much it will grow? And I don't want to know any company in this or not, but just only on this view, just academic discussion on this. But yes, in my personal view, definitely this will be the big sector, but just wanted to know from the experts. So, Niraj, first of all, you are an expert, and we are just learners, and we learn from you. क्यों So, ले रहे हो यार, हम बच्चे हैं आपके सामने यार. नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं. But as far as this printed circuit boards is concerned, so even इसमें I have met an unlisted company as well, and the sector looks quite promising because अभी shift जो सारा आ रहा है, China +1 जो भी लोग बातें कर रहे हैं, that is true. Or even the company which we met is directly dealing with a very big company in US. तो जो भी आप समझे पीसीबी हर चीज में यूज होगा, इवन क्लीन एनर्जी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो चार्जिंग स्टेशंस होते हैं उन सब में यूज होगा. दिस इज व्हाट आई हैव अंडरस्टूड सो फार. आई एम स्टिल रीडिंग अबाउट दिस सेक्टर और अभी इतना ज्यादा पढ़ा नहीं है, बट आई फील फ्यूचर इज ब्राइट फॉर दिस सेक्टर. एंड लिस्टेड कंपनीज का भी जितना मैंने देखा है, उनका भी ग्रोथ अच्छा आ रहा है, जो नंबर्स सभी मैंने देखे. आई थिंक सेक्टर शुड डू प्रीटी वेल, बट इतना इसके बारे में अभी पढ़ा नहीं है, तो व्यू नहीं दे पाऊंगा. I think this may be one of the fuel to the or input to the Ishmohit also. I think Ishmohit is also there. Okay, so we should invite him as well. Definitely. So I think on this there may be a food for thought for Ishmohit, because see, just like you know, in COVID period, or I think in some years ago, there was a big demand and shortage for the chips. You know that. So every motor vehicle or every other company was struggling for this. Even you may go for buying a car, they was only giving you one key, because second key they were not giving you because there was a shortage of the chip. In my personal view, there may be a same thing may come also for PCB. Once there is a big demand coming from the India, and there is a stoppage of the demand, or you can say production or import from China. I'm also totally researching on this, finding which sector, which company, which raw materials may be further used in this. But definitely, I think that this is one of the growing sector in coming years to come, where if you see IT is growing, if you see the electronic industry is growing, if you see everyone today are using the electronic in whatever the situations may be, correct? So therefore, PCB, I think it may be one of the big sectors, but just wanted to know from the views from your side. So Nirav ji, which are the listed companies right now in this sector? So if I can remember correctly, there is Syrma SGS. Which one? Syrma SYRMA. Then there is Avalon Tech, that is also into PCB and EMS, electronic manufacturing services, right? Then there is Centum Electronics, I think they are also into it. Okay, even fine line circuitry. But don't you think valuations are on the expensive side? Definitely. That's only I'm saying. Na? So therefore, there is no point of discussing any particular company. I'm just saying that we have to discuss on a particular sector. Company, definitely we have to afterwards study that and dig out which may be the best company, depending upon the valuation, depending upon the PPS, depending upon the promoter integrity, depending upon the debt and everything. But yes, first if we find out and identify the sector is good, the demand for that will be good, then I think identifying the company will be the not a big role. I think sector मेरे ख्याल से पहले important है. Like today, if you see, I am very bullish on the
egg powder sector. You must have seen in my tweet from last 7-8 months, and I don't want to name any particular company, but this is a big sector which may have a big boost. Which one? Which one, Niraj? Egg powder. Egg powder. Okay. Hmm. So a big shift from because of this war disruption, because of the China disruption, there may be a big demand globally for this egg powder, and it will also increase. There may be companies are there, but going whether or not we have to jump immediately or not, there is not a point. But yes, definitely a sector has to be studied first. But therefore, I think that PCB is one of the sectors which has to be studied. But we just wanted to know views from all the experts. No, I agree with your points, Niraj. Hmm. I think there are enough tailwinds in the sector to support high growth in coming years. So yeah, this is one sector to watch out for. Correct. Because if EMS or everyone is PCB. talking about electronics, why we should miss this also? Right. Hmm. Right, Niraj. Thank you. Thank you. Thank you, Mohit. Yeah. Yeah, Link, we can take the next bit. Yes, okay. So Vineet Bhai is also in the speaker panel. Vineet Bhai, if you wish to speak anything. Hi everyone. Hi Riyan. Hi Mohit. How are you? Yeah, I'm very well, Vinitji. Congratulations on your face-to-face episode. Thank I you. saw Thank the you. tweet, but I'm yet to watch the complete episode. कुछ So first of all, आराम से congratulations on that. कुछ Yeah. खास नहीं है बट हाँ यार एक क्वेश्चन है आई एम hearing lot of news on wind power ग्लोबली बहुत ज्यादा टेलविंड्स बन रही हैं और इंडिया में भी बहुत सपोर्टिव एनवायरनमेंट हो रहा है इन विंड पावर व्हाट इज योर टेक ऑन द इंडस्ट्री So wind industry मैंने इतना ट्रैक किया नहीं है सच में. आई एम ट्रैकिंग सोलर इंडस्ट्री, सोलर एनर्जी का जो पूरा इंडस्ट्री है, वन सोलर पैनल और उसके एंसिलरी मैन्युफैक्चरर्स जो उन सबको मैं ट्रैक करता हूँ. बट विंड आई हैवंट ट्रैक सो फार, बट या टेलविंड्स आर देयर, सो इट शुड डू वेल. जितना अभी तक मैंने पढ़ा है, जो भी बिडिंग प्रोसेस में चेंज हुआ है, दैट इज ऑल्सो वेरी पॉजिटिव फॉर द कंपनीज विद इन दिस सेक्टर, और उसमें अच्छा खासा रैली भी आ चुका है. बट कितना मतलब स्केलेबल होगा इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर अपन देखते हैं विंड के बारे में, बिकॉज पहले भी काफी रैलीज आए थे, काफी नई कंपनीज भी आए थे. तो आई एम स्टिल वॉचिंग दैट कि कितना ये सस्टेनेबल होगा, क्योंकि इंडिया में आप अगर देखते हो सोलार आई थिंक इज मोर suitable to the conditions of a country rather than wind. So No, still. no. So Mohit, so we have to differentiate. So I am talking about in most of Indian wind power companies are actually suppliers towards Europe and other countries. So where wind power situation is far better as compared to India, and hence their clientele, etc., revenue, etc., 90% of it comes from outside India. And considering the kind of tailwind it is creating across the globe, and the recent events of Gamesa getting into trouble, etc., I think Indian players are on a better footing. But I'm not sure somebody who is tracking it very closely, maybe Jiten Bhai is also around and Ishmohit is also around. If they can participate in this discussion, happy to have their views. But this is something which I wanted to understand and know if anybody can contribute. So, Vinny, it will be much better if you can just brief us about the changes which you are seeing in the sector and in any companies specifically. So that would be better, and we can discuss more on that. So, what are the changes that you are seeing in the wind sector, and if there are any companies which you are tracking? I would not like to take any company names here, but yeah, we can discuss on different things once we have a good reading after it. Probably, I just wanted to have an overview before we can deep dive into it. Thank you. Okay, we will take the next question.
So let's take question from the line of Abhishek Rao. Hello. Abhishek ji, I have invited you to be the speaker. So Am I audible? Yes, loud and clear. Yeah, thank you. So my question is for you, Mohit. I recently saw that you're tracking this company in the SME space called SKP Bearings, right? So wanted to know your view on that. So I started tracking it after looking at your post, and I found the company really very exciting. So their balls division is expanding from 480 ton per year capacity to almost 5x, which is 2400 ton per year. And if you look at their latest H2 earnings call as well, so their roller capacity is also going up from 1320 ton per year to almost 2400 ton per year post introducing a new technology in the continuous furnace. And the company also was speaking about growing its revenues to almost 4 to 5x in the next coming 2 to 3 years with peak capacity. So, and the management also sounds very good. And uh, if you, I heard a lot of interviews about the management as well. So, very decent guys, very humble, down to earth people. So, how do you see this company? How do you, and the bearing space also, if you look at the competitors, NRB Bearings, Menon Bearings, a lot of traction is being gained in this sector. A lot of FIIs are entering this sector. So, how do you see this sector and this particular player in this sector? Yeah, so Abhishek, I'm bullish on this company, but disclosure first, I'm holding this company. Please don't consider this as a recommendation. This is just a normal discussion. So, yeah, the thesis is the same which you have pointed it. So, they are increasing their capacity by 4 times in next 2 years, and they are targeting revenues of more than 200 to 250 crore in next 3 to 4 years. This is what I have heard. So, this is why I'm bullish on the company. And for their key product, the demand from a single customer is more than what they can even produce currently. So even after 2 to 3 years after capex, so only one customer of theirs can take that supply. So even the company has received Maruti Green certification, and value of that business can be close to 60 crores from each customer, and there are many customers for that. So I think the company should do pretty well, but in their bolts division where they are doing a lot of capex, their margins are slightly lower than their rolling segment. So margins might fluctuate a bit, margins might contract a bit, but I think over a longer period of time, if you see, even in the last quarter, they had mentioned about some slowdown in Europe. This is why their sales were down. If you see from H1 to H2, their sales were stagnant. This was due to some slowdown in their European business, Yeah, but some they are import they are managing duty that. Yeah, thing. but they are Yeah. managing that. So I think over a longer period of time, next 3 to 4 years, the company should do pretty well because the company is into business from last 30 years. So I think next 3 to 4 years should be good for the company. Right. But do you see any moat in this business as compared to the other bearing, other than the part that they have captive energy sources, which reduces their power cost to almost 80%, hence the Right. EBITDA margins of almost around 40-45%, which will come down to 30-35% given the reduction in margins due to the balls division. But other than that, do you see any other modes which you think is a So differentiated play as compared to other bearing players? what I have heard from some people who are tracking this company very closely is that NRB has also tried developing some of their products, but they couldn't succeed in that. So there is some mode in their product. There is some technological, I think, advantage to them. So that is the mode. That is the entry barrier to their business. And one more mode, which you can call a hidden mode also, is that the market size is pretty small. So I don't think any new player will enter because even the growth is very slow in this in the products they are working in, and the market size is also small. Even in the rolling segment, if you can see. Right, right. Yeah. And I think they're the only player who are into all the four elements, right, in India. That is what they Right, claim. right.
Right, that is true. Right. Sure. Thanks a lot. Mohit. Yeah. Okay, we will take the next question. So, okay, Manav Agarwal, I have invited you to the speaker panel, so you can unmute yourself and ask the question. Hello. Yes, hi. Yeah, I want to ask Mohit on your view on Synergy Green and any textile stock, small cap textile stock you can recommend for tracking. So I'm not, yeah, hi Manavi. I'm not tracking Synergic Green that actively, but I think this company is into casting products which are used in wind turbines. So they are manufacturers of wind turbine casting. Okay. But I don't have any further information or any study on this company. So if anyone from the panel, Riyank, Sudhir Bhai or Vijay ji, if you have any views on this company. Even I can see Meet Bhai. Meet Bhai can also share his views on renewable sector as he is tracking it very closely. Sudhir Bhai, any views on Synergy Green? पर्सनली इस कंपनी को तो मैं ट्रैक नहीं कर रहा हूँ मोहित भाई, सो आई वुड नॉट बी एबल टू कमेंट ऑन दिस. Okay. So since no one is tracking this company, Manavji, we cannot give you any. And on the textile space, any small cap or mid cap stock you can recommend for tracking? So I have started reading about Ambika Cotton, so you can read about the same. Since this is just a discussion, not a recommendation. Yeah. Okay. Thank you. Yeah. Okay, we will take the next question. So Ranjan ji, I have invited you to the speaker panel. You can unmute yourself and ask the question. Yeah, thanks everyone giving the opportunity. Can someone give the view if someone is taking on the Zota Healthcare? I'm super excited on this company for the moment. So, do anyone tracking this company? So yeah, hi Ranjanji. I'm not tracking this company, but one of my friend does. So I think this company sets up pharmacy stores under the brand called Dava India, if I remember correctly. Ranjanji, am I audible to you? Yes, I can hear you, Mohit. Yeah. So I was asking whether I remember correctly. One of my friend is taking this company, and they operate stores under their brand called Dava India. That's correct. Yeah. Yeah. So this is what I know about the company. I don't have any further study on this company. So if Riyank, Sudhir Pai or Vijay ji, if any one of you I is think taking I this missed the name of the company. What is the stock name again? Zota Achha, Healthcare. Zota Healthcare. Yeah. So I'm not excited about the business in which the company operates. So I'm not tracking this company. It is really The another company, Mohit, which I would like to hear with any all experts, is the BEW Engineering, because I know there are a lot of capex going on in SRF and other pharmaceuticals and chemical company, and I think BEW is well placed for as a proxy player. It could play like actually Glasscoat or Praj, in of the past. So I know the Meets are also tracking this company, but any inside information or any good proxy information on this? So even we don't have any access to insider information. So if you have, then please inform us. No, I mean not insider. So, sorry, this is a wrong word. But if yeah. you know about the company, that's what I'm trying to say. Sorry. Yeah. So I have heard a lot of good things about this company, but I'm not tracking this company actively. So I think, as you have rightly pointed out, that since chemical and pharma sector is doing
pretty good capex, so this company should also do well. But I'm not tracking this company. If anyone else from the panel is tracking this company, please provide your views. No, not really. For Zota Healthcare, even though I was tracking that stock, I can comment on that. I think Zota should probably consolidate between 300 to 400. अभी उसकी वही रेंज चल रही है. So probably अगर 400 क्रॉस करता है, then we can see 450 500 levels coming in. पर तब तक मुझे लगता है 300 to 400 की वो जो रेंज है, उसी के बीच में थोड़ा स्टॉक should ideally trade between. Okay, thanks, Mohit. Yeah. I just wanted this to speak. Thank you. Okay, thank you. So Mohit, I would like to request you if we can invite few more people in the speaker panel from the listener section. I can see Ish Mohit. I can see. Yeah, sure. Please do that. I can see Ish Mohit. I have already invited him, but I think he is joined from laptop. So I'll just invite a few people he if is they want to unable join. I'll also invite Abhishek Murarka is there in the speaker panel. Jiten ji is there. Yeah, please do. So I'll just invite them in case they wish to come up and share their views there. Then we are more than open. Meanwhile, we'll continue taking the questions as well. Right. Okay, so let's take a question from the line of Anand Lakhotia. Anand ji, I have invited you to the speaker panel. Anand ji, you can unmute yourself. सर हेलो मोहित जी. Yes, आवाज आ रही है मेरी? Yes, आवाज आ रही है. सब मेरे पास JSW एनर्जी और सिप्ला है, तो उसके लिए आपकी राय चाहिए हम मेरे को. JSW एनर्जी सिप्ला दोनों मतलब बड़े स्टॉक्स है, लार्ज कैप. अच्छा. तो हम इतना लार्ज कैप कभी ट्रेक करते नहीं है, तो आपको अच्छा. हाँ. तो कुछ राय आपकी, होल्ड करे या क्या करे? So JSW एनर्जी आई थिंक अच्छा कंपनी है, आप होल्ड कर सकते हैं. सिप्ला के बारे में कुछ व्यू नहीं दे पाऊंगा. और पावर मैक सब? पावर मैक भी हम ट्रेक नहीं करते हैं. अगर कोई और ट्रेड करता है पावर मैक, प्रियंक विद भाई. Sir, JSW Energy, I can maybe give you some technical view of that. जैसे ही ये 280 to 285 का रेंज से बाहर निकलेगा, there can be some good traction as we've seen. So there has been some good volume action last week as well. So 280 to 285 is the range which is once broken. I think you can find good traction in the price in JSW Energy, sir. और सिप्ला पे मैं थोड़ा कमेंट कर सकता हूँ. आई हैव बीन ट्रैकिंग फार्मा सेक्टर सिंस द लास्ट फ्यू डेज. तो आई फील फार्मा सेक्टर ना अभी एक अच्छे रेजिस्टेंस के आसपास आया है, एंड सिप्ला इज आल्सो ट्रेडिंग बिलो अ क्रूशियल ट्रेंड लाइन. तो अगर ये 1030 का लेवल क्रॉस करता है और उसके ऊपर एक अच्छी क्लोजिंग दे देता है, देन इट कैन पोटेंशियली हेड टुवर्ड्स 1150 और 1200 का लेवल ऑन द अपसाइड. सो दैट इज फॉर सिप्ला. पावर मैक के लिए सब? पावर मैक, The Power Mac technically काफी रन अप हो चुका है सर, एंड ऑन द लार्जर टाइम फ्रेम्स बहुत हीटेड है. सो आई थिंक इट्स टाइम फॉर सम पार्शियल बुकिंग, या फिर ये स्टॉक अभी एट द कंसोलिडेशन में जा सकता है सर. तो मेरे पास 1050 के लिए है सब. सर प्राइस वाइज एडवाइस तो एकदम लेवल्स पे नहीं कर पाएंगे, बट यस काफी द इंडिकेशंस आर, चार्ट्स आर काफी हीटेड है सर. तो प्रॉफिट बुक कर ले. सर प्रॉफिट बुकिंग की एडवाइस आपको कोई नहीं दे पाएगा यहाँ पे. Exactly, yes. Okay, right, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Okay, so we'll take next question. Yes. I have invited Krish Dhanresha. Hello. Yes, Krish. Yeah, am I audible? Yes, loud and clear. Yeah, actually, I wanted to ask about TTK Prestige.
So what I have seen is that like bottoming out is being it's ongoing, and it's forming a rounding bottom till around 150 odd rupees. Sorry, 1050 odd rupees. So what's your view upon that particular sector as well as the stock? Rian, Sudhir Bhai, you can take this query because this is more towards technical. I have not been closely tracking TTK Prestige, so I would request our remaining two speakers, Sudhir or Vijayji, you can comment if you are. I think it's too very early to call it to be a rounding bottom. Yes, the kind of rounding bottom formation is evident, but it's too very early, to tell that a rounding bottom has been formed because a rounding bottom will be completed only, as you said, near 1050. So right now, the stock is also been forming a base on the weekly time frame. So yes, maybe once we see some movement above, say around 770 to 780 levels, we can look for the next up move, sir. Thank you. So I can see Jiten sir in the speakers panel. So Jiten sir, good evening. How about you? Good evening. How are you? Yeah, I'm very well. Yeah. So Jiten sir, as we know, you are tracking commodities very closely, and we call you an expert in cyclicals, identifying the cycles. So what is your current view on textiles? Because we were discussing about some cotton yarn manufacturers. They are at very compelling valuations, and we are finding them very attractive. So what is your view on textile sector as a whole, and what are the other sectors that you are tracking, and what is your view on the markets? So, of late, with the valuations which are there in the markets, generally what I am preferring is actually contrarian plays uh, only, to be honest, because most of the sectors which are doing well are quite, at valuations which we generally don't invest. We look for value. So, all I'm hunting right now is in sectors which are contrarian or which have a possibility of turning around in the next 1 year or something. So, textile is something which we are looking at now. We still think there is some more pain, but maybe I think from second half onwards, they can start doing well, especially the exporters, what I'm talking about. So we have nothing under a coverage right now, but we are looking at it for possible investments in that sector. Other sectors which we kind of have been basically investing now is chemicals is something which we are looking at, sector which has gone through a rough financial year 23. A lot of players, not all, but many of the players. And we think that, I think maybe another, I think Q1 and Q2 pain could be there at the most, but second half looks good. And we also see, whether the sector has long-term tailwinds. Uh, See, there is no point in trying to enter sectors which don't have long-term tailwinds. And I believe that chemical as a sector has very long-term tailwinds. I think the sector will grow for a very long time. It's just that I think post-COVID margins had gone up very high, and Street gave very high multiple on those high margins, and that is why we have seen the big correction in the sector. But I think if we have a slightly longer term view, we can start looking at uh, some names in that sector. Uh, so that's my view on chemicals. Other sectors, which if you have any questions, I'll be happy to answer. But only on investing and sectors. I will not be able to comment on any particular stuff. Right. Jiten bhai, just if you can throw some light on the sector of packaging films.
lots of capex which we've seen, but I read one of your articles where it mentioned that there's lots of difference between demand and supply. If you can throw some light, how is the situation now if you're tracking? Yeah, so I think on Value Picker also I had posted some time back that I believe that supply is huge. A lot of capex has come online, and I think that situation is continuing and will continue for some more time. So I think about 2 quarters back is when I completely got out of the sector. It was a fantastic run, and right now I'm waiting. So I have no plans for some time to look at that sector, to be honest, because I think capacity additions have been far higher than what the demand growth will be there. There will be some equilibrium which will happen in the future, but I think I will wait for some more time. Thank you, Jiten bhai. Okay. Thank you, Jitenji, for sharing your views and coming in the speaker panel. I can see we have Abhishek Murarka also in the speaker panel. So, Abhishek ji, how are you? Hello. Yeah. Hi. Hi, Mohit. Hi, Hi, Riyank. Abhishek. Yeah, hi Abhishek. How are you? Doing well. How are you guys? Yeah, very well. Please, So yeah, I yeah. kind of came to the speaker panel just to add something I was reading, particularly with the question being on TTK Prestige. I think a while back. तो मतलब ये आज के ही न्यूज़पेपर में कवरेज है कि जैसे if you see Vijay sales, they are one of a good indicator of at least the white goods. तो वो बोल रहे हैं कि उनका Q1 के numbers were very weak. The sales in Q1 were down 15% YOY for April to June compared to last year. Now, इतना डिटेल में है नहीं, but it is just indicating that offtake was expected to be very good for the summer, but unseasonal rainfalls have caused an issue. And TTK Prestige, in my view, it's a good company, but not very cheap. Probably अभी इनका हमारा भी रिसर्च कवरेज मैंने पढ़ा था, तो इन लोगों का एक स्टार ब्रांड था कॉल्ड जज बाय प्रेस्टीज, more in smaller towns and cities, which they had rolled back and relaunching in H2. So probably H1 में अभी numbers will be weak, and this stock should give a good entry point. So my only view there was no rush. And the other question on Cipla, I am not a pharma expert, but I wanted to come here and ask a question if somebody has a view. Pharma में two things are happening. I am seeing US FDA जब भी active होता है तो इंटरेस्टिंग टाइम्स होते हैं, मतलब डेफिनेटली देयर आर मोर लॉन्चेस, बट ऑब्जर्वेशंस भी दबा के मतलब काफी जोरों से आ रहे हैं. अभी आप देखो तो इप्का लैब्स पे भी देयर आर 8-9 ऑब्जर्वेशन. सिप्ला का भी जो मेन फैसिलिटी है वो पीतमपुरा में, वहां पे भी मार्च एंड में इनका कुछ वो हुआ था यूएस एफडीए का. दे आल्सो केम अप विद अ लॉट ऑफ ऑब्जर्वेशंस. सो आई वांटेड टू आस्क specifically on pharma because that's an interesting space. Anyone has a view on these increasing US FDA observations and audits? अभिषेक, जितना मैंने अभी तक पढ़ा है फार्मा में यूएसएफडीए इंस्पेक्शन तो बहुत कम हो रहे हैं अभी. जितना पहले हुआ करते थे, जितना रिक्वेस्ट उनके पास पेंडिंग है, उसके कंपैरिजन में बहुत कम हो रहे हैं इंस्पेक्शन. आई थिंक दैट इज फॉर न्यूअर यूनिट्स जो अभी बना है लास्ट 1-2 साल में. बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक ऑब्जर्वेशंस और जिसका जहाँ तक सवाल है, जितना पहले रेशियो था उतना ही अभी रह रहा है. सो मतलब आई डोंट थिंक वैसा कुछ इशू रहेगा. तो अगर आप थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर पाए अपना क्वेश्चन. नहीं मतलब I came in to ask on Cipla only. Like Cipla का they are leaders in the respiratory category, US respiratory, and they have a very very good portfolio. So I was just actually I didn't come to answer. I came to ask if somebody has a view on the observations that came on their Pitampura facility a while back, if anybody knows. Okay, so your question was regarding Cipla. Okay.
So I'm not tracking Cipla, but if anyone else does, then So I can come on. Abhishek made 2 points. First was about a consumer company. So I wanted to tell you one thing is that in this space, if valuations are very high and if there is a shock in a quarter or something, there could be significant corrections. So one should be aware of that. When you pay a high price for your entry, you should be prepared for a cut if one of the quarters doesn't go well. So that is true for most of the the high PE or the high valuation companies. So that's why we always say that entry valuations matter a lot. So and I think last 2 3 years has been at least last 2 years, all these companies which had very high valuations uh, have struggled. Despite some of them, showing decent growth also. Just because I think your starting valuations are not in favor, and over a long term, I think your stock price CAGR will converge with your net profit CAGR, to be honest, or the cash flow CAGR. So just keep this in mind when you invest in all these high PE companies. Just make sure that there is enough growth. Typically uh, the most one should pay is a PEG of 2.5 for the very high quality companies. But I'm seeing PEGs of 5 and 6 and 7 and 8. Those are not sustainable. This is my observation uh, for many of these companies, and we have seen it play out for the last 2 years. I think this will continue for a few more years, is what I think. Agree, sir. Consumer Second पे is just adding some thoughts and point. जो मतलब I'm just connecting few data points that I was reading. एक देखो विजय sales is a good data point for value white goods बहुत बिकते हैं वहाँ पे and they are saying 15% consumption down है. दूसरा हम लाइक आई वर्क विद आईसीआई सिक्योरिटीज एक हमारी एक रिपोर्ट आई है हमारा एफएमसीजी कवरेज बहुत अच्छा है मतलब सारे सेक्टर्स की कवरेज है बट आई पर्टिकुलरली बिलीव जो एफएमसीजी के हमारे एनालिस्ट हैं लीड एनालिस्ट मिस्टर मनोज मेनन वन ऑफ द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड पर्सन वो हमारे एफएमसीजी रिपोर्ट में हमेशा पढ़ता हूँ तो एक अच्छी रिपोर्ट आज आई है विच इज सेइंग दैट कि जैसे ये एंड ऑफ सीजन सेल होता है मिंत्रा वगैरह सब कोई का जनरली दैट इज एन इन्वेंट्री क्लियरेंस सेल वो अच्छे से मार्केट होता है बट इट इज एन इन्वेंट्री क्लियरेंस सेल this time the end of clearance sale has happened 2 to 3 weeks before it ideally happens every year and the discounts being offered this year are very very steep मतलब they have done on ground survey and all that shopper stop में 50 से 60% डिस्काउंट मिल रहे हैं पॉइंट आई मेकिंग इज एज अ कंज्यूमर गुड टाइम टू गो एक्चुअली टू शॉपर स्टॉप एंड सी आपको बहुत अच्छे डिस्काउंट मिल रहे हैं बट व्हाट दे आर इम्प्लाइंग इज कि कंजम्पशन ग्राउंड लेवल पे इतनी अच्छी है नहीं मतलब जितना मार्केट में बुलिशनेस है वो के शेप रिकवरी जो बोलते हैं उसमें जो मास कंजम्पशन वाला सेगमेंट है वहां पे बहुत कहीं से भी एक्साइटिंग सिग्नल्स नहीं आ रहे हैं अगर आप देखोगे जून का डेटा ऑटो का तो हीरो होंडा का सेल्स डाउन है मतलब ओवरऑल तो मतलब हर सेगमेंट ही डाउन है बट ओवरऑल डबल डिजिट डाउन है whereas Eicher Motors is well up 15-20% up जो नंबर्स आए हैं आई एम सिंक वाइट गुड्स नहीं बिक रहे हैं आपके अप्रैल रिटेल में वीक नंबर्स हैं हाई डिस्काउंटिंग चल रही है आपके ये सब हो रहे तो थिंग इज कि हमारा consumption numbers are not great and even the one data came in RBI this study कि क्रेडिट कार्ड में थोड़ा स्ट्रेस दिखने लग गया है मोर इन द पीएसयू सेगमेंट विच आई थिंक इज मोर लेड बाय एसबीआई कार्ड्स एंड फ्यू अदर्स बट वहां पे 90 days DPD has gone to above 15% and I think those are good early signs because in a lending product क्या होता है कि कोई अगर 10 साल का प्रोडक्ट है और आप जीएनपी निकाल रहे हो तो that can easily be artificially made to look good by lending more
but a credit card which is a very short duration and a very high interest rate product, उसमें जब एनपीए स्पाइक होने शुरू होते हैं, that's an early sign कि probably there is excess lending, then there is ability to repay. So my feedback here is not to be blatantly bullish or cautious. This market is a very interesting market in the sense जो एकदम, it sounds cliched, but it's a stock because market in absolute sense. There are segments which are looking very very good. A lot of things are falling in place, but somehow I feel for a layman, for a aam aadmi, it's not really that excitement on the street is not there. That is what I feel. So there will be a lot of value migration that I think will play out in the next 6 years, while index will not fall much. जैसे अगर एक सेगमेंट इंटरेस्टिंग है देख सकते हो तो शुगर इंटरेस्टिंग लग रहा है. While there has been a run up, sugar पे realizations are expected to be the highest ever in FY24. मतलब at an industry level, the EBITDA is expected to grow 60-70%. And I'm not the best person to speak. संजय मन्याल करके एक ट्विटर हैंडल है, आप उनको फॉलो कर सकते हो. उनके हैंडल में आप without any space संजय मन्याल space sugar टाइप करो. He has been writing very good stuff and very logical. So sugar looks one interesting space to me. I'm looking at selective plays there. I agree on sugar. I think. अच्छा, I'm so sorry, I forgot sugar. जितेन भाई तो है sugar god. No sugar god or something, but yes, that is something which we were waiting, and we do have a few recommendations currently in that sector, and I think it looks good. Just one risk is there, which is of course the political risk that pre-election year. So FRP is something which we should track closely. I think we'll know by maybe August or something. So that is one risk or point which we should consider and track that closely. Right. So thank you Jiten ji and Abhishek for your views. Priyank, अभी हमें queries लेना चाहिए. I think बहुत request pending है. So we should proceed with. Oh yes, definitely. Yeah. Okay, Amarjeet Singh, I have added you to the speaker panel. What I'll do is I'll just add 2-3 people together and then we can one by one take them. Yeah, sure. Okay, yes, Amarjeet ji. Amarjeet ji, you can unmute yourself. Hello, sir. I am audible. Yes, loud and clear. Sir, your view on Wonderla Holitage and BLS International, both fundamentally and technically. So this question is from Amarjeet ji, right? Yes. Yeah, so we are not tracking any of these companies, Amarjeet ji. Even I am not tracking any of these companies, BLS and Wonderla. So. Okay, sir. Okay. So technically, I have been tracking Wonderla, and अभी Wonderla में last month ही breakout आया था all time high का. So I feel the company is poised to touch levels of 750 on the upside. तो यहाँ से trend मेरे को positive लगता है Wonderla में. And regarding your second company, what was the name again? BLS International. BLS International. No, I am not tracking that stock. So Sudhir ji can be a better person to comment on. Neither am I tracking the company, but BLS का जो chart मैं देख रहा हूँ, it's price which is trading somewhere around 208. Am I right? Yes, yes. Yes, sir. ये stock अभी all time high resistance के पास ही है. As of now, we would not, really try and make any position over here. और in fact, rounding bottom का rejection पे ही खड़ा है अभी फिलहाल ये. So once this resistance is cleared, maybe you should look at it rather than
making any positions on this now, sir. Sir. Okay, sir. Thank you. Okay. We will take next question from Anuj. Anuj Gupta. हेलो सर। सर न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर पर क्यों क्या व्यू लग रहा है आपका? एक्चुअली अनुज जी न्यूक्लियस भी हम ट्रेक नहीं करते। थोड़ा सबसे एक रिक्वेस्ट है कि स्टॉक्स पे जितना कम हो सके आप क्वेरी कीजिए, आपको कोई भी बिजनेस डिस्कशन करना है, बिकॉज वी कैन नॉट रिकमेंड एनी बाई और सेल एडवाइस। तो जितना आपको डिस्कशन करना है उस पर ज्यादा रखिए, तो थोड़ा इंटरेक्टिव बनेगा पूरा सेशन। बट या न्यूक्लियस हम ट्रेक नहीं करते हैं। और सर सेंट्रम इलेक्ट्रॉनिक? नहीं, वो भी ट्रेक नहीं करते हैं। ओके सर, थैंक यू। So if anyone from the speaker panel is in these companies, they can unmute themselves and make. Jiten ji or Nirav ji, if regarding this Centum Electronics, obviously there is no disclosure, and disclosure there is, I'm not holding it, but yes, company is good. And BLS International, definitely I like it a lot. I spotted it around 80 rupees prior to bonus. After that also it is bonus, and then again it is now at all-time high. BLS, I think someone asked, so BLS is also a good company, definitely. And Wonderla Riyank, as you correctly said, so breakout to hai, but if you see in the amusement sector, there are only three companies. One is Imagica, which you I think know that Malpani Group has currently invested 400 crore in that. Second is Nico Park and Resorts, and third is the Wonderla. Out of all the three, Wonderla is the only company which is totally debt free, and also they are also coming up with some new amusement center or park in Chennai, and I think that will be ready around by 24 or by end of 24 or not, and that will be the biggest one. So definitely Wonderla is also having a wonderful future. But here, once again, a disclaimer, not a holding and not a buy or sell recommendation. Just wanted to add this point. Okay, perfect. So next question, I think we have someone from the name Money. So Yeah, hello. Good evening, Mohit, Priyank, Sudhir. yes, good evening. Yeah. मैं जस्ट एक तो मोहित से मेरा क्वेश्चन पहला है कि रिको का रिकमेंडेशंस और टेक्निकल वगैरह आपने चार्ट और उनकी जो अभी जो लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट आया था उसमें भी आपका कमेंट मेरी होल्डिंग है। मैं बस इतना चाह रहा था कि क्या आप बता पाएंगे कि क्या फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स इसका कितना आगे है? तो सबसे पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहूंगा। मेरा नाम रंजीत है। या सो रंजीत जी, सबसे पहला कोई रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एक मैं हमेशा इंफॉर्मेशन अपडेट करता हूँ जो भी कंपनी के बारे में मुझे लगता है, कंपनी के बिजनेस के बारे में लगता है। तो आई थिंक जैसा मैनेजमेंट का गाइडेंस है, इस साल भी 15 से 20% का टॉप लाइन ग्रोथ और मार्जिन भी डबल डिजिट में रहना चाहिए। तो कंपनी ओवरऑल अच्छा करना चाहिए, और एक BMW का भी इनको प्रोजेक्ट मिलना है शायद। अगर वो भी मिल जाता है, साथ के साथ डिफेंस का जो इनका वर्टिकल है वो भी अभी स्केल अप होना है। तो आई थिंक ये सारे हमें ट्रैक करने पड़ेंगे, इनमें जो भी अपडेट्स आता है उसके बाद ही हमें डिसाइड करना पड़ेगा। ओवरऑल प्रॉमिसिंग लग रहा है। डेट थोड़ा सा ज्यादा है कंपनी पर, बट कंपनी का एक गुड़गांव दिल्ली जयपुर हाईवे पर अराउंड 27 एकड़ का जमीन है जहाँ पर प्लांट भी है। तो वो कंपनी ने अभी सेल पर लगाया है, तो उससे अच्छा खासा अमाउंट कंपनी को रियलाइज हो सकता है। तो आई थिंक कंपनी अगर लॉन्गर टर्म के हिसाब से देखते हैं तो अच्छा कर सकती है, बट क्योंकि एक सिक्लिकल आप सेक्टर में वर्क करते हो, मतलब रिको ऑटो का आपने पूछा है, ऑटो सेक्टर सिक्लिकल है काफी, तो आपको थोड़ा सा कोशिश रहना है। बट लॉन्ग टर्म मुझे अच्छा लग रहा है।
हाँ, मैं पिछले 4 साल से होल्ड कर रहा हूँ और काफ़ी ठीक-ठाक अभी लेवल्स पे हूँ, तो मैं बस ये जानना चाह रहा था कि अभी कितना उसको मतलब ये अच्छा है, आपने जो बताया प्रोस्पेक्ट अच्छा है। सेकंड वन अभी का जिस तरह से जो मार्केट चल रहा है लॉट ऑफ कैपेक्स भी ऑलमोस्ट जो है सब सेक्टर में पीएलआई भी गवर्नमेंट इनिशिएट कर रही है। अभी अगर किसी सेक्टर में यहाँ से अगर किसी को जाना हो तो क्या किस सेक्टर में आपका रिकमेंडेशन होगा? आई थिंक गवर्नमेंट ने अभी ग्रीन हाइड्रोजन पर काफी इंसेंटिव्स लॉन्च किया है। आई थिंक 19,000 करोड़ का कुछ एक बेनिफिट्स गवर्नमेंट देने जा रही है जो भी कंपनीज ग्रीन हाइड्रोजन स्पेस में है। तो वो एक स्पेस हो सकता है जो आप देख सकते हो, अभी काफी लिमिटेड आपको कंपनीज मिलेंगी इसमें। तो बट उस स्पेस को आप, उस सेक्टर को आप थोड़ा सा रीड कर सकते हो। ओके, वन लास्ट क्वेश्चन, अपोलो माइक्रो सिस्टम के बारे में कोई आप में से नहीं, कोई इनसाइट दे पाए, एनीवन अगर फॉलो कर रहे हो तो? मैं ट्रैक नहीं करता हूँ, आई थिंक प्रियंक ट्रैक करता है। तो अपोलो माइक्रो आई वाज ट्रैकिंग फ्रॉम दिसंबर 2021, आई थिंक समवेयर अराउंड 160 रुपीस मैंने अपने प्रोफाइल पर भी डिस्कस किया था। तो अभी तो आई थिंक पोस्ट स्प्लिट द स्टॉक इज ट्रेडिंग अराउंड 55 रुपीस लेवल्स and monthly charts are looking positive only, but given that the stock has given a substantial run up, I think यहाँ पे थोड़ा सा cool down आना चाहिए and it might come down till 40-45 odd, but आगे चल के there is a good possibility of stock going towards higher levels once again. 7500 might see coming in the picture. But I think we should avoid अभी because रन अप अच्छा आ चुका है, आगे it is your। हाँ नहीं, वो टेक्निकली देख रहा था मैं, एसएम में भी अभी वो आ चुका है, इसलिए पिछला लोअर सर्किट था उसमें। मैं इसके फंडामेंटल और फ्यूचर्स के बारे में जानना चाह रहा था, अगर कोई इंसाइट किसी के पास हो। नहीं, फंडामेंटली आई थिंक कोई भी ट्रेक नहीं कर रहा है, बहुत एक्सपेंसिव साइड पर भी स्टॉक है, तो यस आई थिंक मतलब इन माय व्यू यू शुड अवॉइड कम। ओके, थैंक यू वेरी मच। Yes, okay, we'll take the next question. Chetan ji, Kenil ji, I have invited just 2-3 people, so we can take one by one. Chetan ji, first of all, you can unmute yourself and ask the question. हेलो सर, रिगार्डिंग केमिकल, आई मीन मेरा क्वेश्चन था, बट आई थिंक जितिन सर ने भी थोड़ा इंसाइट दिया है। बट केमिकल इज वेरी आई मीन ब्रॉड बेस्ड सेक्टर, तो इसमें आई मीन कहाँ पे देखना चाहिए? रीजन बीइंग आई मीन लास्ट 1 to 3 ईयर आफ्टर कोविड इसमें काफी ये हुआ था, आई मीन स्टॉक्स फ्लाइड लाइक एनीथिंग। So going forward, like after Q2, Q3, क्या दिख सकता है? I mean, it will be growth driven. I mean, we can see, or it will again come back as a bang in after COVID we have seen. And मतलब particular in chemical क्या देखना है? जैसे like बालाजी अमीन्स हो गया, दीपक नाइट्रेट हो गया, या any other things in chemical we should look at right now to track. Jiten sir, would you like to take this question? Jiten ji, are you there? Yeah. So stock specific, I will not be able to say anything, but I've given my general view already on the chemical sector. So we look at companies which are, have done a lot of capex, and the capex is coming on stream, and you also have to see whether there is a demand for their products or not, and then look at from valuation perspective also. Look at normalized margins. For example, just to give example, some company might be doing, let's say, 35% post-COVID kind of margins, and now they've come to 20% or something. But if you see historically, I think their margins will be, let's say, 25 to 27%. So based on their capex and based on future sales growth, you plot the numbers according to these normalized margins, and then you work from there. All I can say is that I believe FY24 will be
much better than FY23 for a lot of these companies. And we'll take it from there. We'll see again review in second half, but I think second half looks far better. Okay, I hope you have your question answered. Jitenji, I think the Europe issue and Europe slowdown, that will also actually have a big impact on the chemical sector, no? So he was asking about the impact of slowdown in Europe on the chemical sector. Hello. Ian, am I audible? Yes, yes. So I think there is some issue. Hello. I can't. Yes, I can't hear anything actually. To be honest, what you spoke or something. Jiten bhai, the query was the effect of the slowdown in Europe with respect to the chemical sector. Yes, so we will, as I said, I think Q1 will also be challenging. Q2 will be slightly improved than Q1, and I think Q3 onwards we should see some improvements. Now, the thing is the slowdown can work both ways. For some companies, it will be beneficial because if the manufacturing costs in Europe are high, then they will import, and for some it will be detrimental. So again, we have to be we have to look at each company case by case. It will be very difficult to give a generic comment. Similarly, for example, in capital goods, some companies will definitely benefit due to exports into Europe actually, and some will suffer. So it's very very difficult to give a broad view because company specific vagaries will be there. So that's all I can say. Thank you, Jiten bhai. Okay, Kenil, you can ask your question. We can. Yeah. Hi, I'm Chanel. Mohit, I have one question regarding Raised Limited. Uh, are you guys tracking this company? Which one? Resgen? Yeah. No, we are not tracking. I am not tracking this company either, so Yeah, I can I think the price is 48 and market cap is 100 crore. So the company is very very small in. Hey, I will have to leave now. I think it's well past my sleeping time. So thank you all. And yeah, much sure. for joining. Yeah, thank you, Jitenji, for joining. So Kenil, we are not tracking this company. Okay, Sachin ji, we can move forward to the next question, right, Mohit? I think Avdesh is there. Avdesh is there from very no. Hello Good everyone, evening. good evening. If I can go with my question. Yeah, Sachin ji, you go first. Yeah, good evening once again on all panel guys and all participants. Actually, my question is on one of the sector which I am thinking that it will, it will broaden, it will increase in India, which is waste management sector of India. Since everyone is bullish about the economy, growing economy of India, so this will be only by the help of lots of manufacturing, and manufacturing will lead lots of waste. So for the managing that waste, so I mean your views on this particular sector, please, anyone. Yeah, the sector should do pretty well. You have pointed out the reasons why should it do well, but we are not tracking any listed So companies in this sector. yeah, so exactly same view I also have, and I'm tracking one company, and I'm already slowly staggering where I'm investing in one of the company. If we can go stock specific, please.
It's a Anthony Waste Management that I'm tracking and investing for covering this sector. So, your views if anyone is tracking that particular stock? Sir, we're not specifically tracking anti wasting, but yes, the recycling industry as such looks quite interesting, keeping in terms that the policy which the government has bought. As of now, the policy which government has, I think what I have read is they have roughly around 20 to 25% of the waste needs to be recycled, at least from the PET plastic side, which I see, which they plan to scale it up to 60% by FY30. So yes, there is definitely lots of traction which is coming up, is what I see. I'm not tracking any company as such in this. Um, can I just add in this, so if you allow? Sure, Neeraj. Yeah. Avdesh has asked this, no? Yeah. Sachin ji as well. Yeah, Sachin. Sachin, I don't know, but the thing is that when we were having a short meet, me, Sunil, the Chat Mojo, and Vijay Thakkar. I think Vijay Bhai is not there now. Otherwise, he would have also added into it. When we were at Jew Beach, the truck was passing on, the mini van was passing on, and it was actually carrying the waste and taking all the waste of the Jew Beach. And it was written that Anthony Waste Management. I said, just see this company. This is a listed company. This is a big sector which is coming, and not today. After 3 or 4 years, I think everyone will be talking about this company. And now you can see this. I think Vijay is not there. Otherwise, you would have added and he would have seconded me. But I'm just telling you, I'm just tracking since last 3 4 years this company since IPO, and definitely as you added, I second you. It's a big, not about the company, but the sector is yes very good and very growing. So what waste management, waste treatment, and water cycle management. These are the three major sectors which has to be focused, and the companies that definitely has to be independently only identified. But obviously on Anthony, no, my recommendation buy or sell nothing. But definitely on the sector, it is yes, very good. Yeah, just want to add this only, Mohit. Yeah, Thank you very much, sir, all of you whosoever share your views. I have one more sector to be discussed. Actually, I also belongs to a marine sector. I am a chief officer in Merchant Navy, and the thing is, I'm just trying to ask if anyone have the views on the marine sectors. As like I'm keep on reading in the news, government is planning slowly improving the port facilities, logistic. So they are improving port conditions are improving, and as well as governments talking about the inland waterways and all. So, do we have any opinion on the particular marine sector, logistics sector, or something like that? So, Sachin ji, your question was regarding the companies which are opening in marine and Exactly, the companies which are working in construction part. Let's say if we discuss one of the company Adani Ports, I'm not going stock specific, particularly for the Adani Ports, but a small company, since we are focusing on smaller micro cap companies. So manufacturing of the dredge ships and drilling ships, this and that, and logistic department containers, and even since there will be any kind of development in constructing in inland waterways, so a lot of companies will be involved in this whole theme. So related to that. yeah. Sudhir bhai, any views? नहीं मोहित भाई, actually the sector as such I'm not really tracking because काफी run up इसमें हो चुका था तो. Right. Neerav ji, any views? No view on this. Okay. Sachin ji, since no one is tracking, so we cannot do anything. All right, no issues. Actually, I would like to share one name here. Currently, this company is in SME,
and the company name is Knowledge Marine. So they have a few dredger ships which can drill, dredge, and take out the mud from bottom, and they have some supply ships as well. But anyways, I'm just reading through about that company. I thought I would share with you guys. Okay, thank you, Sachinji, for asking a question. I hope we could assist you. Yeah, thanks. I go with the two stock specific. If anyone can share your views. One is Mercury EV Tech, another is Precision Camsoft. I am not tracking those two companies, so I No, won't. I think even I am not picking these companies. So, Riyank, let's do one thing. Let's take one or two more queries because it's Yes, so what we'll do very is we'll late. just So, take one last question and then we'll proceed to close the session for the night. So I'll take the question from the line of Aleem Kazi. no, I think Avdesh is there from very low. Okay. Avdesh ji, so Avdesh ji has any questions? Good evening, Moiji. Good evening, Sudhir sir. I have. Good evening, Neeraj ji. I have some of my favorite speaker here. Actually, I being a mentee of Rishi, I am always following the momentum stocks. Recently, I believe in fact themes works very well in the stock market. Earlier, we have seen the defense theme and railway theme. Now I am looking a lot of verging in this EMS sectors, that is electronic manufacturing sectors. Are you tracking anyone? Please, can you give the insight of this sector? Anyone, please? Mohit, Nirav, and Sudhir, Riyank. I think Neeravji has talked about the sector Yeah. earlier. So, Avdesh, that's only, I think you were not there. So we were discussing about that only. The electronic sector as well as the EMS sector. So both will have a big upcoming, or you can say a good future for the coming years. And this will not be only for 1 or 2 years, or just you can say like, but it will obviously stay for decades, because the way which we are growing and the way which we are turning for EVs, the electronic is definitely becoming a part of everyone's life. And if you see every state or every cities are actually turning out to be a, you can say, smart cities. The growth of the electronic products, growth of electronic industry, growth of EMS definitely will have a big boost. And if you see in the Gujarat, there is a big gift city is also coming up, and there also the sector which will grow, no doubt about the service sector, but definitely everyone will require the electronic there to set up the entire gift cities. And similarly, wherever the government is setting up the cities like this, or wherever the PLIs are given, wherever the companies are setting up the entire sectors that for manufacturing this, the electronic industry will have a big role. Plus, not only in the domestic consumption, but even the globally also, India is also having a good market share in global. Plus, there are good numbers, good companies also which are into this sector. Definitely, we are not talking on the companies now, but sectors, yes, there are very good. This is a very good sector which I am also tracking now. Okay, thank you, Neerji. It's a really very good insight received from you. One more things I just want to know about the this uh, trending markets. I've never seen these multi-years breakouts. What's happening in the nowadays? Uh, what it indicates? What it indicates about the peak of the market, just a beginning of. I'm really very bit of confused. In fact, I have one of my portfolio of that is multi-year breakouts, and nowadays there is no is a flood of these multi-year breakouts. Today itself, I have shared in my
Twitter, almost 20 confirmed breakouts and almost 15 or 20 very good companies are waiting for multi-year breakouts. So it's really flood of multi-year breakout. So what is the beginning of new starts, or is it the peak of this market? Can you give me insight, please? Sudhir bhai? Sir, what I would say over here is it's always better to take everything with a pinch of salt. When we get too many good things happening at one time, it's better to pause and wait for some time and get a clarity. It's better that you try to correlate it with the results a little bit and try to understand the business and the story rather than, just going on that, yes, there are multi-year breakouts and we should, bounce into it. So it's all when you're getting so many breakouts, it's better we get a little bit caution as to which stock should we really trade into. Okay. Because too much of positivity is also not good sometimes, I feel. Okay. Thanks, Sudhirji. So it's all over from my side. Thank you. Okay, thank you, Avdesh. So this was the last query. So apologies to those who have sent us the request, but we will take their query in the next session, which we will do very soon. So yeah, thank you everyone for joining the session. Even we didn't announce about the session formally, but we had close to 700 listeners at the peak. So thanks for the love. Thanks for joining us. And yeah, good night. Thank you, Good night, everyone. small boy. Thank you. Good night, Muthu. Thank you. Thank you, everyone.